organizing this. And it's a very wonderful to be in front of all Chhattisgarh BNY's graduates over here. And मेरा हिंदी अच्छा है, but only I cannot speak about genders. I don't know whether train is female or male, whether panga is male or female. Other than that, I speak good Hindi. So because there are people who join from across the country also, तो थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में I will kind of manage. Except the gender bias I'll be doing throughout my presentations. फुल स्क्रीन ऐसे होता है? नो नो, अपना डुप्लीकेट कर लीजिए स्क्रीन को, स्क्रीन डुप्लीकेट. स्क्रीन डुप्लीकेट डुप्लीकेट. या सो टुडे हम लोग बात करेंगे ऑन्कोलॉजी, नेचुरोपैथिक ऑन्कोलॉजी के बारे में. सो मैं जहां से आ रहा हूँ, सो हमारा एक इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल है. सो कैंसर ऐसा एक चीज हो गया आजकल, लेकिन इंडिया में इतना तेज से बढ़ रहा है. इंडिया में प्रेजेंटली द करंट स्टैटिस्टिक्स 1 आउट ऑफ 9 इंडियंस को अपना लाइफ टाइम में कैंसर आने की चांसेस है. दिस द करंट स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम 2020. सो एवरी 9th पर्सन यहाँ पे जो बैठे हैं और हम सब मिलकर हमको कैंसर आने का चांसेस बहुत है. सो उसी कंडीशन में हाउ टू टैकल कैंसर एंड रिसर्च ऑन कैंसर हैज बीन गोइंग ऑन फॉर लॉन्गर टाइम. बहुत साल से कैंसर रिसर्च चल रहा है, बहुत सारे मेडिकेशन आ रहा है, बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स आ रहा है, रेडिएशन आ रहा है. सो हमारा जो हॉस्पिटल है वहां पे इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी चलती है, जहां पे इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी मतलब देयर इज नो सिंगल सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज. क्योंकि अगर नेचुरोपैथी से पूरा कैंसर टैकल कर सकते कैसे पूछा तो नहीं, अगर एलोपैथी से पूरा कैंसर टैकल कर सकते हैं क्या, वो भी नहीं. सिद्धा, होम्योपैथी, नो. एवरीबडी has a certain goal and kind of component हम उसमें ऐड कर सकते हैं जो कैंसर केयर में. So that is what we will be proposing over here. And being a naturopath, so I head this hospital. लेकिन हमारा hospital there is medical oncologists, there are surgeons, और वहाँ पे होम्योपैथी डॉक्टर्स है, वहाँ पे सिद्धा डॉक्टर्स है. So हमारा एक ही इंटीग्रेटिंग राइट काइंड ऑफ अप्रोचेस. जहां पे कीमोथेरेपी चाहिए वहां पे कीमोथेरेपी देना चाहिए, जहां पे नहीं चाहिए वहां पे नहीं देना चाहिए. सो एज डॉक्टर्स हमारा ट्रीटमेंट मोडालिटीज डिफर होगा, लेकिन हमको पता होना चाहिए एक डिजीज के लिए कितना एक्सटेंड हमारा काम वहां पे हो सकता है, और कब अब पेशेंट को रेफर करना है, कब पेशेंट को इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी में लेके आना है, कब सर्जरी के लिए प्रेफर करना है, कब सर्जरी के लिए नहीं प्रेफर करना है. और कैंसर ऐसा चीज हो गया कि अगर हम सब लोग यहां बैठे, हमको एक ऑप्शन दिया जाएगा, आपके पास आपको 2 बीमारी है ऑप्शनल, उसमें कौन सा बीमारी आप चूज करेंगे. एक साइड डायबिटीज है, दूसरा साइड कैंसर है, हम कौन सा चूज करेंगे? विच इज आइदर वन चूज करना पड़ेगा, हम कौन सा चूज करते हैं? सो वी चूज डायबिटीज. लेकिन स्टैटिस्टिक्स पर डायबिटीज इज किलिंग 11 लाख पीपल पर ईयर इन इंडिया, कैंसर इज ओनली किलिंग 8 लाख पीपल पर इंडिया. सो कैंसर से मरने वाला 8 लाख है, whereas diabetes से 11.5 lakh people are dying every year in India. मतलब स्लो डेथ है, लेकिन डेथ तो जरूर है. सो हमारा चॉइस क्यों डायबिटीज की ओर चले गए? बिकॉज वी फील दैट कैंसर इज वेरी स्कैरी. द मोमेंट किसी को कुछ डायग्नोस हुआ, लाइक इवन इफ somebody goes there is a excessive bleeding in the uterus, वो लोग हॉस्पिटल गए, उनका सर्जन हिस्टेक्टमी किया. हिस्टेक्टमी के लिए एंड होता है कि बायोप्सी में भेजना है जस्ट टू चेक और कंफर्म आपके पास कैंसर नहीं है. लेकिन वो 3 दिन जब बायोप्सी रिपोर्ट जब नहीं आएंगे आपके घर पे, यू एंटायर फैमिली, आपके पास कुछ कैंसर के कारण नहीं, यू विल बी इन स्ट्रेस बिकॉज हमको कैंसर नहीं चाहिए. एंड कैंसर के साथ इतना प्रॉब्लम्स क्यों होता है? क्योंकि आजकल एक चीज होता है कि हमारा एक दिन, जैसे कि हम सब डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, एक दिन पूरा दुनिया में बीमारी ही नहीं है, किसका नुकसान होगा? हमारा हॉस्पिटल्स, फार्मा कंपनी, सबकी प्रॉब्लम हो सकता है. कहीं ना कहीं हमारा एक आशा भी होता है
देयर शुड बी डिजीज, और मॉडरेट में रहना चाहिए, बस हमको नहीं आना चाहिए। पूरा दुनिया में डिजीज बने रहना चाहिए, जाके हम हॉस्पिटल खोल सकते हैं, हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एंड हम कितना भी हम होलिस्टिक है, आप होलिस्टिक नहीं है, रिडक्शनिस्ट है, उसका कुछ मतलब ही नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे डायग्नोसिस इज वेरी हार्मफुल फॉर द फैमिली एंड द पर्सन। सो पूरा दुनिया में हम आजकल इंस्टाग्राम में है, यूट्यूब में है, मैं भी सुबह एक इंस्टाग्राम वीडियो डाल के आया यहाँ पे, क्योंकि मेरा जब वापस जाएंगे पेशेंट रहना चाहिए हॉस्पिटल में, तो मैं किसी को डरा के आया हूं यहाँ पे। सो आप लोग भी ऐसा करते हैं कि कहीं ना कहीं वी फॉर काइंड ऑफ विल बी गिविंग अवेयरनेस टॉक्स। अवेयरनेस में कैसा होता है, पानी मत पियो कैंसर आएगा, पानी पियो कैंसर आएगा, सो कुछ भी कर लो कैंसर आएगा, ऐसा हम डरते रहते हैं हर दिन। सो एंड इवन इफ यू वांट टू वॉच अ मूवी, जैसे कि आज दिवाली के दिन है, हम थिएटर में जाके एक मूवी देखेंगे, पहला अमिताभ बच्चन को नहीं दिखाएंगे, किसको दिखाएंगे? स्मोकिंग कॉसेस कैंसर। एंड अननोइंगली मेरा 3 साल की बच्चा भी कैंसर के बारे में जान रहा है, और मुकेश को सबको पता है, उनका माँ की बैंगल सोल्ड, एवरीवन नोस अबाउट मुकेश एंड रमेश थ्रू द कंट्री। सो एवरीवेयर वी हैव एन अवेयरनेस अबाउट कैंसर, जो अवेयरनेस के कारण, एंड हम लोग सब डॉक्टर है, मैं जब सुबह से शाम तक क्लिनिक में बैठता हूं, पेशेंट्स आते रहेंगे, इतना सारे कैंसर पेशेंट्स आते रहेंगे, शाम को जब मैं घर जाऊंगा, जो सिम्टम्स मैंने बोला सब मेरे को भी है, टायर्डनेस है, पेट में दर्द होता है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, सो एवरीथिंग लीड्स अस टू कैंसर। सो इफ एट ऑल हमको कैंसर से रियली वी वांट टू गेट रिड ऑफ कैंसर्स और थॉट प्रोसेस अबाउट कैंसर, बिकॉज डब्ल्यूएचओ का डेफिनेशन हम लोग कम्युनिटी मेडिसिन में जो पढ़ा है, health is a state of physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity. बीमारी की absence और बीमारी की सोच, infirmity means we don't even understand what is infirmity, it is about the thoughts about diseases. उसको भी जब हम हटाएंगे तब पूरा दुनिया स्वस्थ हो सकता है। एंड as doctors हमारा पेशेंस की कमी कभी रहने वाला नहीं, बिकॉज nobody listens to whatever we say and we ourselves don't listen to ourselves. हम यहां बोलेंगे चाय मत पियो, बाहर जाके हम चाय पियेंगे। यहां मत बोलेंगे शक्कर बहुत खराब चीज है, बाहर जाके हम शक्कर खाएंगे। सो डॉक्टर्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट पेशेंट एक्चुअली। सो पेशेंट्स भी मान जाएंगे फास्टिंग करेंगे, हम लोग फास्टिंग नहीं करेंगे, हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे जो हम बोल रहे हैं। सो ये जो चीजों को हमको हटाने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द ग्राउंड लेवल व्हाट इज रियली कैंसर, व्हाट कैंसर बियॉन्ड आपके मेडिकल टेक्स्ट बुक से ज्यादा क्या हो सकता है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो फॉर दैट next slide. Okay, so if you look into the word cancer, the term cancer means different things to different people. For doctors के लिए अलग अलग मीनिंग्स है, for patients के लिए बहुत अलग मीनिंग होता है, क्योंकि I am in the hospital where हमारे पास इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी है। सो लोग कहां से आता है, एलोपैथी, होम्योपैथी, तिरुपति एंड देन नेचुरोपैथी। So when भगवान भी छोड़ देते, they come to naturopathy for having some magics happening in our clinic. So whenever they come, they might not have some organs, there may be mastectomy, there may be half liver has been removed, half of the organs has been removed, colostomy bag रखे आते हैं, or they might be already undergone 10 to 15 कीमोथेरेपी साइकिल्स ऑलरेडी हो चुके होंगे, रेडिएशन हो चुके होंगे, नहीं तो सब लोग, कुछ लोग सेल्फ मेडिकेट करते हैं, हर्बल मेडिसिन लेके बैठते हैं। सो जब हमारे पास आएंगे, इट इज काइंड ऑफ स्टेज 4 और एंड स्टेज में लोग आते हैं, एंड जो कॉन्वर्सेशन हमारा जो कंसल्टेशन में होता है, दैट इज वेरी मीनिंगफुल दैन व्हाट वी हैव रेड इन द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में ऐसा चीज होता ही नहीं है, जैसे कि आपको कैंसर को क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। सो कैंसर मीन्स ऑल दिस टू यू। समबडी फील्स वेरी सैड, कितना भी आप काउंसिल करो, कितना भी आप चीज पॉजिटिव रखाने के लिए बोलो, फिनेंशियली इट इज वेरी ड्रेनिंग फॉर पीपल, क्योंकि व्हेनेवर पीपल कम टू अस, उनका पूरा गाड़ी चले गए होंगे, पूरा जमीन बिक चुके होंगे, दे माइट हैव सोल्ड एवरीथिंग, बैंक बैलेंस इज ओवर, पीपल कम एंड से दैट प्लीज सेव माय वाइफ, सेव माय डॉटर, सेव माय हस्बैंड। लेकिन हम भी भगवान नहीं होता, हमारे पास भी कुछ आंसर्स ज्यादा नहीं होता। लेकिन व्हाट वी हैव इन नेचुरोपैथी इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल फिलॉसफी, द सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, एंड एवरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन स्टैंड्स टॉल विथ इट्स फिलॉसफी। अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड, over a period of time, maybe in 50 years, 60 years, we have moved away from the philosophical practice of naturopathy or any system of medicine. I'm just naturopath, I'm telling for naturopathy because we all are colleagues. We have moved away from naturopathic philosophy. Now we are mimicking modern medicine practice. Modern medicine is very strong on their philosophy, reductionist approach. They are very much in terms of symptom relief, very much in removal of whatever is there as obstruction, emergency management. मॉडर्न मेडिसिन स्टैंड्स टॉल, इसलिए उनकी ग्रोथ भी इतना तेज से हो रहा है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू मिमिक देयर प्रैक्टिस।
We are trying to replace metformin with Karela ka juice. Metformin is 1 rupee, Karela is dukh in the dil as well as the liver. So we cannot replace metformin. It's 1 rupee, 8 hours of solid glycemic control. And we cannot replace metformin. What we can replace is we can replace why the need of metformin is there in a person by reversing the root cause of a disease. So self-healing capacity, that first year mein hum jo pad rahe colleges mein, that is a primary thing where you can sell yourself to the patients. And if you want to really change the world, change the community, change the incidence of cancers, हमको वो होना चाहिए. And then having patient will be feeling guilty. मेरे को क्यों कैंसर आया? I was doing exercise, I was doing yoga, I have having 6-pack, I have 10 lakh salary every month. मेरे को कुछ ऐसा ग्राउंड ही नहीं है, मुझे कैंसर नहीं आना चाहिए. I have taken all the vaccines possibly which can prevent cancer. I am eating Chyawanprash every day, Dabur. Still मुझे कैंसर क्यों आया? So people will be feeling guilty, people will be feeling burden to the family, burden to the society, they'll be feeling emotional weak. हमारा हॉस्पिटल में very difficult patients are the young patients because anxiety level बहुत ज्यादा रहेगा क्योंकि हमको और 20 साल जीने का लिख के रखे हम आया है, हमको पता नहीं कल हम जिंदा रहेंगे कि नहीं. When we are young, we feel that we are going to live longer. Whereas young patients die faster in our hospital, older patients recover very fast because उनकी कुछ उम्मीद ही नहीं है अगले साल आएगा. But they will live longer because stress level is very, very less. And that also comes in our philosophy, unity of disease and unity of cure, which I'll be covering later. So this is what it means for the patient. Whereas for the doctors ko, we need one magic bullet. जैसे कि you can see in Instagram, somebody speaks about ivermectin is good for cancer. Somebody speaks about radiation is good for cancer. Somebody speaks about sun bath is good for cancer. Somebody speaks about alkaline juice is good for cancer. But everything is good for cancer. Starting from water to sleep, सब anti-cancerous है. लेकिन what is the kind of proportion what we are using definitely matters, and where the patient stands, on what sort of physical condition the patient stands also matters जब हम cancer की इलाज करने टाइम. But doctors के लिए आजकल if you look into cancer is an incurable thing. जैसे कि जब मैं कॉलेज में था, our cancer patients are only in Harsh Mohan's last pages of that slides. Squamous cells, all this, because we never get cancer patients directly to our hospital. So हम वो भी skip करते थे पैथोलॉजी में क्योंकि स्क्वैमस सेल की पिक्चर ड्रॉ करना है बहुत मुश्किल है, एंड टू रिमेंबर एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल, क्लियर सेल, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, वो हम स्किप करते थे. बाद में अभी 15 साल की बात ऐसा दिन आया, वी हैव टू सी एवरीडे एडिनोकार्सिनोमा, सी एवरीडे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा. तो फॉर अस फ्रॉम द माइंड इट इज इनक्यूरेबल. कैंसर आया तो आप रेफर कर लो, आप कुछ नहीं कर सकते. दैट इज अ प्राइमरी थिंग. और पेशेंट सब कुछ ट्राई करने के बाद आपके पास आएंगे, तब आप फास्टिंग दे सकते हैं, रॉ डाइट पे रख सकते हैं, जबकि पेशेंट विल कम बैक टू लाइफ. नो. द सेकंड थिंग, इट्स अ जेनेटिक डिसीज. ऑफ कोर्स इट इज अ जेनेटिक डिसीज, लेकिन what is mean by genetics? This also we do not understand. Whatever we don't understand, we say two things. One is stress, another one is genetics. Third thing, it's meant for conventional doctors alone. Fourth thing, no remedy in complementary medicine. जहां पे जितना भी आप पेपर्स पढ़ लो, around 99.8% of papers जो कैंसर की और कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की आए होंगे, सब स्पीक्स अबाउट adjunct care. You are not the primary care provider, आप adjunct care प्रोवाइड करते हो. नीचे फर्स्ट फ्लोर में यू टेक कीमोथेरेपी, 7th फ्लोर में जाके योगा कर लो, जाती आप उल्टी नहीं करेंगे. नहीं तो आपको पेन रिलीफ होगा, एक्यूपंक्चर कर लो, नहीं तो आप योगा कर लो, जैसे कि स्ट्रेस और एंजाइटी अबाउट कैंसर चले जाएंगे. कहीं भी हम बात नहीं करते इन द पैथोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कैंसर में, वेयर इज आवर रोल, विच पार्ट यू स्टैंड फॉर ट्रीटिंग कैंसर. उसके लिए वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड द टोटल रूट कॉज और कॉसेशन ऑफ कैंसर्स पर से. देन हम लोग ऐसा बात करते हैं कि पेशेंट ऑल्सो कम एंड आस्क, पापा को कैंसर है, कितना साल और दे सकते हैं आप? मैं बोला कितना पैसा देंगे उतना साल देंगे, राइट? बिकॉज वी कैन नॉट से दैट, बिकॉज आई डोंट नो टुमारो आई विल बी देयर, मैं बीमार रहेंगे तो कल मैं नहीं हूं. तो I cannot say how many years we can give to people. Even doctor is not sure. The doctor will die faster than the patient sometimes. So prolongation of life is somebody expects, because जब आपका कैंसर की डायग्नोस होगा, from the moment of diagnosis you decide that you're going to die, and what happens is depending upon the luck. हमारा अगर lucky रहा तो हम जिंदा रहेंगे. So that is why nobody asks any question if cancer patients die in a hospital. Whereas if you die for some other condition, if diabetes आकर मर गया, if you look at the statistics, is 11 lakhs. Diabetes में मरने वाले ही है. But कैंसर को हम क्यों, कैंसर से हम क्यों मर रहे हैं? Because of improper management or improper understanding about what is cancer and how we can tackle cancer. And then if you move forward, Chandan, can you
Next slide. It's not moving. Yeah. So present day, आजकल कैंसर की ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज क्या क्या अवेलेबल है? Whenever patients comes with us, the common treatments which is available for cancer presently is one is like you have hormone replacement therapy, जैसे कि breast cancers, hormone induced cancers के लिए replacement therapies होता है. Then you can do surgery, then you can do bone marrow transplantation for blood cancers. Then you will be doing chemotherapy. Then you have target therapies, radiation, as well as immunotherapies. So these are the common therapies which are available, which is popular and evidence-based therapies and available under insurance in India or anywhere in the country, anywhere in the world. Why this is available? Because we as a community, हमको हर बीमारी के लिए एक दवाई चाहिए होंगे. So we don't look for answers for a disease inside the totality of where we live. We look for answers in biology. क्यों कैंसर हुए? हमारा जीन ऑफ कोर्स चेंज हुआ है, देयर इज अ म्यूटेशन, बट व्हाई देयर इज अ म्यूटेशन वी डोंट चेंज, वी डोंट लुक इनटू. हम लोग इसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं कि वो म्यूटेशन को कैसा बदल सकते हैं, व्हाट वी कैन डू. सो म्यूटेशन के लिए बदलने के लिए वी यूज इम्यूनोथेरेपीज, वी यूज टारगेट थेरेपीज, कीमोथेरेपीज, एंड इफ द कैंसर is so much grown or it is localized to a single organ, we can do a surgery and remove it, and then post that you give chemotherapy. उसके बाद you go and ask them, like everything is right till you do a chemotherapy or a surgery, but problem है कि we are not understanding that chemotherapy or surgery or radiation is not a cure, it's a management. आप उसके बाद क्या करते हो, based on that it depends whether you are going to get a relapse or not. So sometimes patient comes to me after multiple mastectomies, lobectomies, multiple organectomies, they come to us. They say that primary, secondary, tertiary, there are a lot of cancer spread over in the body. They just blame the medicine, blame the doctors, blame the system. They never blame them. क्योंकि पहले भी आपको कैंसर को रिमूव नहीं किया है, you have just removed what is seen in the PET scans, what is seen in the CT scans. But why there is a cancer? So if you look into all of us, हमारा body में every day we have genes which get mutated. Now when we are speaking, अभी बात करते हुए कुछ genes mutate हो रहे होंगे. All these genes basically, it is influenced by the environment. For example, एक घर पे रोज डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, सुबह डोमेस्टिक वायलेंस है, शाम को योगा है, सुबह डोमेस्टिक वायलेंस, शाम को योगा. You are more in a situation where your genes are in a stressed environment. You are going to develop any sort of DNA instability. We can call it as unity of disease. DNA instability can lead to diabetes, it can lead to hypertension, it can lead to cancer, it can lead to any autoimmune condition. So after the DNA instability, if you lucky, you will get cancer, you go to an oncologist. If you are lucky, you get diabetes, you get a diabetologist. If you are lucky, you get a autoimmune condition, you go to an immunologist. But still, the trigger of your DNA instability is still there inside your body. And what we look into is like, क्यों ये instability हो रहा है, कहां से हो रहा है, that we need to kind of correct. So in our hospital, ये सब strategies रखते हुए, these are the strategies which we use as adjunct. That means it suppresses or control the progression of a disease. लेकिन cure of the disease comes when we treat the root, when we treat what is happening in cancer per se. So that is what we'll be discussing. So in general, the modern medicine concept is like, if you know, you can either poison, in terms of you can poison the cells which are outnumbering in numbers or which are abnormally behaving metabolically through chemotherapy. You can burn it through radiation. So if there is a pain or if there is any organ like a mastectomy you do and then go for a radiation, then you have removal. You can remove through the organ through the surgery. Okay, but again, these all are the standard approaches which is available, which is very well evidence based as well. लेकिन इसके बाद क्या करना है, that is our job. That is where we come in a integrative oncology clinic. It is not that हम against है. कोई भी दुनिया में कुछ भी सिस्टम एक दूसरे के against नहीं होता है. It's only about either you are ignorant or you are too extremist in your approach. शायद आप बोलते हैं एलोपैथी सब बेकार है, नहीं तो आप बोलेंगे नेचुरोपैथी सब बेकार है. In दोनों साइड, both are best for the patients. Because we don't understand certain thing, it doesn't mean that it doesn't exist. So absence of evidence is not evidence for absence. कहीं आपको evidence नहीं है, इसका मतलब नहीं कि evidence available ही नहीं है, आपको ढूंढने के लिए नहीं आता है. So you need to find how to find the evidence for treating certain condition. Because at the end of the day, patient को कुछ मतलब ही नहीं है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, या सिद्धा है, या कुछ जड़ी बूटी वाला है, जहां से भी उनको इलाज चाहिए, क्योर चाहिए.
So you as a student of science, be as an engineer, be a pharmacist, be as a naturopath, be as an oncologist, be as a general physician, आपका job है कि as a student of science, find the answer from science. And it can be from any systems of medicine, because there is nothing called system of medicine. If you look into modern medicine comes from biology, chemistry, physics, and everything comes together and they come establish a system. And for us, we use water, we use light, we also have physics, we use mud. So we use every possible science related substance around us for treating conditions. So cancer is nothing but science. And if you just look into our body, we are just cells. And cells को अपना respiration होता है, अपना खाना चाहिए होंगे. Cells को, जैसे कि अभी for example, if you want to prevent cancer, can we take chemotherapy drugs and prevent cancer? We cannot. Every day there are cancer cells forming inside the body. We need to make sure that the cancer cell is very much under the surveillance of the immune system by giving right kind of fuel. That is the food. Because yahan tak ki hai paratha, idli, dosa, vada and all. After this, it is proteins, vitamins, minerals, micronutrients. So body को जो चाहिए. एंड आजकल ये प्रॉब्लम होता है कि इससे नीचे भी प्रॉब्लम है. यहाँ पे पूरा जो पेट में जो गट बैक्टीरियम है उसको भी हम एंटीबायोटिक्स खा खा के वी हैव टेकन इट आउट. सो आप कुछ भी खा लो, इवन सप्लीमेंट्स भी खा लो, अब्सॉर्प्शन की बात ही नहीं हो रहा है. दैट्स व्हाई वी डू इंट्रावेनस न्यूट्रिशन, पुट इट डायरेक्टली इनटू द ब्लड, बिकॉज यू डोंट रिक्वायर, यू कैन बाईपास योर गट. सो ये सब चीज को इंटीग्रेट करते हुए वी कैन एक्चुअली टैकल कैंसर्स very well. So if you just look into the number, क्योंकि हम लोग सब चीज बहुत अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि we are practicing International Day of Yoga for 8 years, 9 years now, and then Ayurveda is there for 300, 500 years, and Sushruta is our mama की लड़का. So we have everything in our country, but still हमारा numbers, we are first in diabetes in the world, we are third in cancer in the world. हमारा numbers बढ़ते जा रहा है. If you just look into the projection in 2022, we are 100 per lakh individuals को cancers incidence है इंडिया में. Then followed by 1 in 9 person is going to get cancer for sure in their lifetime. This is again statistics from 2020. We do not know in 5 years क्या change हो चुका है. And then if you know, if now lung cancer पीछे छोड़ के breast cancer आगे जा चुका है. Most of the women are getting breast cancer, cervical cancers. Then children related pediatric oncology also is flourishing, because a lot of children are also getting leukemias. So where we are standing, we do not know what is the answer for what we are doing. So be it allopathy, be it homeopathy, naturopathy, doesn't matter. हमको answer चाहिए for living long. Even with cancer, it is okay. Sometimes it is okay to live with cancer, but how to live with cancer is something which we need to really create. So our job as naturopaths is very, very high in this, because we are the only guys who can look into the roots of a condition. Fortunately or unfortunately, we don't have drugs. So you cannot think about the moment somebody is coming with a fever, you are not trained to think about paracetamol. The moment somebody comes with a chest pain, you are not trained to think about ECG. You will say gastritis होगा. You patient मर जाएंगे वहां पे. Because we are not trained to take an aggressive approach in anything. You look for problems where it is from the roots. Diabetes आए तो you don't look for how much is the blood sugar or HbA1c. You just look into what is leading to HbA1c rise and blood sugar. So this comes from the philosophical strength. आप खाली अपना हॉस्पिटल में एलोपैथी नहीं बन सकते इसलिए नेचुरोपैथ बन रहे हो तो यू आर नॉट फिट फॉर द सिस्टम. यू कैन पे मनी एंड गो टू यूक्रेन और रशिया एंड बिकम एन एलोपैथ. क्योंकि naturopathy requires conviction. Naturopathy requires very strong feeling. When the patient comes in front of us and tell that everything has gone, you should make them believe that nothing has gone. And that comes from unknown strength of naturopathy, which is called self-healing capacity inside the body. Theory of toxemia. A system works improperly because there is something struck which is not able to perform. Or vitality means even my cancer patient in my hospital, none of them cry. Because we keep their vitality, hope, resilience very high. Even on a higher diagnosis, their body is filling with endorphins, dopamines, and all the growth hormones, not the other stress factors. So that is the role of a naturopath doctor as a teacher. क्योंकि मैं कुछ जादूगर नहीं करता हूँ हॉस्पिटल में. I use philosophy to my strength and use my doctors without fighting with them. So I have a very good relationship with my medical oncologist, my Siddha physician, my homeopathy physician. We work together with the ultimate aim that we have to bring back. Now, acceptance from the modern medicine or other system of medicine is not their problem. It is our business. We should raise up to that level where they consider us.
They consider involving you in the treatment. None of the allopathics reject us just because we are natural. They reject us because they want the patient to be safe. क्योंकि आप में 100 लोग हैं, 20 लोग बोलेंगे sun bath in the morning is good. Another 20 लोग बोलेंगे sun bath in the afternoon is good. Another 50 लोग बोलेंगे sun bath अच्छा ही नहीं है. So people are confused मतलब क्या बोलना है लोगों को. So we should have a consensus among ourselves. We should have a strong ideology behind any prescription making. तब जाके we get acceptance. So this is the kind of statistics what we have. And when we poorly manage cancers, when we do not understand the root cause of cancers, these are the patients which come to us. So first one is a fungating tumor of the breast. Second one is a huge mass on the pelvic region, lymph nodes exploded. This is rhabdomyosarcoma of a 4-year-old guy. Then skin deposits of breast cancer. Then you have a glioma which has deposited in the skin again, then in the oral cancers. And this guy, he has literally came with maggots falling. There are a lot of worms falling from his mouth. His wife literally came to us and told that, please kill him. We don't want to see him suffering. This is because the entire management of cancer has become one-sided. Means either you are going to allopathy or you are going to naturopathy or you are going to herbs or you are going to Ayurveda. We cannot manage cancer by being isolated. We need to be integrated because this is a huge threat against existence of humankind. And we should shed our ego, and also we should learn a lot deeper about what is cancer. Cannot bluff about cancer because patient come and ask me, can I leave? You should know what to say. For that, you should understand what is cancer, where it comes from. You should also know what a drug can do, what a drug cannot do. You should not say blindly, chemotherapy sab bekar hai. You cannot say blindly, you cannot do a surgery, they'll take your money away. No. You need to say in a scientifically rational way, jahan pe hum kya kar sakte hain. So these are some other cases that anorectal tumor, and then a liver tumor having a lot of pedal edemas, then again a breast triple negative tumor, and then an infratentorial meningioma here right in the medulla. So these are the kind of cases we get in our hospital. So I am a naturopath, same like you. I have all the same textbooks. I also learned Henry Lilla. I also learned only the pocket Hashmohan. I also learned everything same to you. But problem is like, how to enhance yourself, because colleges में जो मिलता है, it is very limited, with limited to your syllabus. You have to just pass and come out. उसके बाद आपको क्या करना है, because specialty practice is very much needed, because people require us more than we require people. Yesterday I came here to Raipur. I went to a hospital patient's home. There's an osteomyelitic girl, 13-year-old, completely on immunosuppressants, and down the line in 3 years her kidney will be gone. So we should find an answer for such kind of things. It's not about only cancer. It is about everything. We need to work hand in hand with people, the experts, and you become an expert in the same field so that we can manage conditions like this. And आजकल cancer की management क्या हो रहा है? It is about the blind man and elephant story. What is cancer? Cancer is like a trunk. Cancer is like a wall. Cancer is like a horn. Cancer is like a pooch. It is not. Cancer is a whole elephant itself. लेकिन कैंसर की केयर व्हाई इट इज गेटिंग बायस्ड, वन इज बिकॉज ऑफ द रिडक्शनिस्ट थॉट प्रोसेस, बिकॉज both the doctor and the patient, both of them want cancer to be removed through a procedure, cancer to be removed through a drug. It cannot be possible. Cancer is a metabolic dysfunction जो आपकी साथ बचपन से है. For example, if you are getting blackish discoloration of your skin, acanthosis nigricans behind your neck, under your underarms, you are getting skin tags, you are feeling fatigue, you are having a grade 1 fatty liver, you are getting bald, skin is taking early premature graying, you are becoming obese. Everything shows that there is a metabolic dysfunction. Only that the name is not cancer. You are having diabetes for 10 years, you are having CKD for 10 years. Everything can lead to cancer and vice versa. It's a vicious circle. Which comes first depending upon that? Many patients get diabetes after they get cancer. They will be having a HbA1c of 12 for years together. They are on insulin, they are on oral hypoglycemic drugs, but still they get cancer. So reductionism, trying and finding one target point for treating your condition, it fails. Second thing, individualism. हमको एक ही चीज ऐसा ढूंढना है कि उसको हम responsible बना सके. For example, smoking causes cancer. Most of my patients are 80% are females who don't smoke. So उनको क्या जवाब देंगे? आप स्मोक नहीं किया इसलिए कैंसर आया. So we do not want individualism.
we learn in naturopathy multiplicity of a condition. There are multiple causation for a single cause, a single occurrence. So that is something. And technological bias. Technological bias in the sense, आपको, so I had a patient recently, 42-year-old, in the first biopsy for the breast, it came as ductal carcinoma in situ of breast, grade 4. The same slide sent to another lab because the patient was not convinced, not because I was not convinced. They sent to another lab, it came as nothing. So now where to answer for that patient? Patient is already scared and I have to answer that. And obviously I told we can wait and watch. So what I've done, I've sent that patient to another hospital where the CT scan is there and they don't have an oncology practice. We have done an ultrasound and graded her fibroma which is there, which is either benign or Birat's category 3A. So that means you still have chance to recover, repair. So we go and find what is the real problem which is inducing a small tumor or something like that in the breast. So technological bias means you cannot think beyond technology. And that is something a failure because tomorrow something will come and say that this is better, but today we do not know. So we quantify things based on जो हमको आता है आजकल और जो available है. So that is another problem. Then the industries and policies. I don't know whether I should say this in open. There are many things changed after 2019. You should get it. I don't want to speak on recorded video. So many new patients coming to us with a lot of cervical cancers, breast cancers, or even diabetes, early onset of strokes and all. They come to us post 2019. There are a lot of changes happened in our immune system. So the policies influences us. The industry influences us. So पहले हमको गाय दूध देता था, अभी हम दूध निकालते हैं. So there is no guy giving us milk. We are taking milk from the cow, and milk is one of the problem for cancers. Especially the A1 milks, which contains high level of insulin-like growth factor, and we do not have bacteriums available for digesting casein, the milk protein inside our body, and we are slowly growing. Our organs are growing. So that is why another reason for cancer. So many things which is coming in, and then patients and doctors' belief system. If as a doctor, if I believe that I can heal a patient, that can influence the patient. If as a patient, you can believe that I can heal him, that also can influence the patient's treatment. So it depends upon हमको क्या देना है पेशेंट्स को, पेशेंट को क्या लेना है. पेशेंट का बिलीफ सिस्टम को इन्फ्लुएंस करना भी हमारा जॉब है. Every time, whenever we speak to people, whenever we address an audience, it's very important that you need to go and educate them. Now, other than what I do in my hospital, around 500-kilometer radius, I go to every colleges, every banks, every people, wherever if there is 10 people, I go and talk about how to be metabolically healthy, not about physically healthy. You can be obese without cancer. You can be obese without a heart disease. You can be obese without osteoarthritis, but you can be lean with a metabolic dysfunction, and you can lead to cancers and other XY stuff. So we need to educate people because we ourselves need education for ourselves. We need to educate everyone because this should be a community movement. It should not be an agenda based on a hospital or a doctor. It should be a community movement where patients believe that certain things can be changed. 60% is the change should happen from the community. The need for a change. We cannot advocate change. You should do that. The need for the change should come from the community. And हमारा job हो कि हम जाके उसको explain करें. This much Hindi is okay? Able to understand? Okay. Okay. Then do we have an opportunity? So when we understand that there is a problem, so we need to solve that problem as well. हमको solve भी करना है. उसमें हमारा क्या share है? What is our role in solving a condition? The first thing, yoga naturopathy का cancer के बारे में if you just look into, हमारा major problems or challenges if you look into is, one is that very limited exposure to cancer patients. Okay, other than this movie stars getting cancer in the movies, we don't see cancer patients. So second one, limited teaching about cancer in medical schools, because same like us, our teachers also believe ये आपको जरूरत नहीं है, कभी ये जरूरत में नहीं आएगा. So they don't teach it to that extent where you understand it deeply. The third thing, lack of conceptual clarity about cancer, because we also use ChatGPT to understand the medical reports. So we need to understand what is the cancer, not just what is the propaganda. As a student of science, we need to research every day. Research and understand what is cancer, what is other than what is being told, what else can contribute to cancer, how scientifically it is logically convincing me. Unless you are convinced about an explanation, don't get convinced. Third thing, over lack of philosophical empowerment.
क्योंकि हमारे सामने हर पेशेंट इन नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में एवरी पेशेंट ओनली कैंसर, हर पेशेंट्स डिफिकल्ट पेशेंट्स ही आते हैं. They come and expect magic in naturopathy hospital. Like my seniors and all, they might be treating hundreds and thousands of difficult patients. जो मेरा टीचर है डॉक्टर बाबू जोसेफ, he has been treating poliomyelitis, syphilitic ulcer. I told him I don't believe you because I have not seen that in my hospital. Because हमारा lacking है कि we don't publish what we do. We do tall claims. हम publish नहीं करते हैं. When you don't publish, it just remains as a claim. Whatever magic, you reverse diabetes is a magic. 2023 का paper in diabetology comes like diabetes is a irreversible disease. Every day left and right we are reversing diabetes, but only we know and only our wife knows. आपको पता है मैंने क्या diabetes आज reverse किया? जाके Lancet में बोलो, जाके New England Journal of Medicine में publish करो. You need to publish for perishing. You need to, if you want to propagate, if you want to make people believe about that, you need to publish whatever we are doing. So हमारा philosophical understanding is also lacking. Third one, over emphasis on therapy oriented approach. That means एक patient जब आएंगे, the moment they come, we look for what kind of therapy I can do. Can I put on fasting? Can I put on water therapy? It is not you have to put and find a therapy. People are not coming to us for therapies. They are coming to us for solutions. Therapy आपको गूगल में भी मिल जाएगी. हिब्बात करने के लिए आरोग्य मंदिर में आने की जरूरत नहीं है. एक बड़ा टब लेके बाथरूम में भी बैठ सकते हैं. If you know about हिब्बात, but when to give हिब्बात, why हिब्बात is something which we are expertise in. So उसके लिए we need to understand therapy is not the primary, the physician is the primary. What you present, how you understand or logically you conclude why cancer or why any disease in the body. उसके बाद limiting our expertise as adjunct physician. हम करना ही नहीं चाहते. अगर आपको पेशेंट आपका हॉस्पिटल में किसी को बुला के आप भी मेरे साथ टीम में बैठो, आप कुछ कर लो, नहीं, हम बैठ के देखेंगे, हम योगा देंगे, हम एक्यूपंक्चर देंगे, हम डाइट को प्रिस्क्राइब करेंगे. वी वांट टू लिमिट आवरसेल्फ एज अ एडजंक्ट फिजिशियन. वी डू नॉट वांट टू बिकम अ प्राइमरी केयर फिजिशियन. वी डू नॉट वांट टू बिकम अ प्राइमरी केयर प्रोवाइडर. दिस इज द लिमिटेशन व्हाट वी फेस, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस. आई एम टेलिंग माई सेल्फ एज वेल on among. Then what we need to learn and unlearn. We need to learn is the philosophy. And we need to add our philosophy into the concepts of cancer. Wah, jahan pe, okay, you believe that there is a genetic change, but you need to have a philosophical logic for why there is a genetic change. You believe that something is growing, and cancer in our body, our body does not treat cancer as a alien cell. In fact, हमारे घर पे अगर दो बच्चे हैं, एक बच्चे बीमार है, दूसरा बच्चे हेल्दी है, हम किसको देखेंगे? और जो हेल्दी बच्चे को बोलेंगे जाके खेलो, जाके दूध लेके आओ, जाके वो करो, ये करो. बीमार बच्चे को आप लेट जाओ बेटा, हम खिलाएंगे, केक खिलाएंगे, फ्रूट्स खिलाएंगे, दवाई दे देंगे. सेम नर्सिंग हैपेंस इनसाइड आवर बॉडी. दैट इज आवर सेल्स आर बिकमिंग हाइपर मेटाबॉलिक. सो जो भी आप खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, कैंसर सेल्स इज विजिलेंटली वेटिंग एंड टेकिंग. द बॉडी इज ड्राइविंग द मेटाबॉलिज्म टुवर्ड्स कैंसर सेल. हमको ब्रेक करना है दिस इंडिफरेंस लाइक एनसीआईएसएम. हमको ब्रेक करना है जो वन सेल को यू आर ट्रीटिंग डिफरेंटली, अनदर सेल को आप ट्रीटिंग अनदर वे. तो उसको जब ब्रेक करेंगे तब जाके वी कैन फाइंड अ सोल्यूशन फॉर द कैंसर. यू नीड टू जस्ट मेक श्योर दैट, बिकॉज यू नो अगर किसी ने कुछ मर्डर किया, ओके, व्हाट यू विल डू, व्हाट इज द स्टेट, व्हाट दे विल डू. मैंने किसी को मर्डर किया तो क्या करेंगे? डायरेक्टली मुझे फांसी पे तो नहीं चढ़ेंगे. लाइक व्हाट दे विल डू, दे पुट मी इन अ रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 15 years. एंड व्हेन आई कम बैक फ्रॉम जेल, अगर मैंने वापस एक खून किया, तब जाके मे बी दे थिंक दैट आई शुड किल दिस गाय, ही इज नॉट फिट टू लिव इन दिस सोसाइटी. लेकिन आजकल हमारे बार्बेरियन अप्रोचेस ऐसा है कि द मोमेंट हमारा सेल बिगड़ जाएंगे, हम उसको मारना चाहते हैं. मारना इन द सेंस यू वांट टू पुट कीमो, यू वांट टू पुट रेडिएशन, यू डोंट वांट टू गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर द सेल टू बिकम नॉर्मल. इफ यू लुक इनटू द पेट स्कैन, जब हम कैंसर आपका डायग्नोस होगा, द ऑन्कोलॉजिस्ट विल बी आस्किंग फॉर अ पेट स्कैन. पेट स्कैन में हम क्या देखेंगे? Which are the cells normally metabolic, which are the cells hyper metabolic. मतलब कौन सा cells ज्यादा शक्कर पी रहे. We put a dye called FDG. The FDG goes inside and it get absorbed in different organs. जो organs में ज्यादा काला दिखते हैं आपका स्कैन में, that is called as hyper metabolic cells. So उसकी इलाज है नहीं कि उसको मार के निकालना. उसकी इलाज है कि you need to make that hypermetabolic cells into an ametabolic or normometabolic cell. You need to reverse the process. This is called, we need to regress that particular cells back to normalcy rather than killing. हम लोग सर्जरी कब सजेस्ट करेंगे? When the cancer is obstructing a function.
When the cancer is sitting in your bile duct, not letting your bile go out, we want to do a surgery or we want to put a stenting so that his bile acids can come down and he will become non-jaundice. Or if it is obstructing your vena cava, if there is a thrombus, वैसा condition में you suggest surgery first come to treatment. And losing an organ will be the last thing which we propose if at all we are not able to manage. Because जो भी हम कर रहे हैं इसका नहीं कि 100% हमको result मिल रहा है. We are also losing 20 to 30% of people because only 70% we know, 30% none of us know. क्यों हो रहा है? तो उसको हम need of learning and unlearning. For that we need to understand the basic philosophy of yoga and naturopathy. So first thing in yoga, in naturopathy, we have 5 principles. That is a principle which we use. पहला है कि do no harm. पहला थी कि आपको नहीं आता तो आप रेफर कर लीजिएगा क्योंकि डोंट किल द पेशेंट. सेकंड थिंग, आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द कॉज, डोंट ट्रीट द सिम्टम्स. सिम्टम ट्रीट करने के लिए एलोपैथी इज द बेस्ट सिस्टम. यू डोंट हैव टू टेक एनी एफर्ट टुवर्ड्स दैट. ट्रीट द कॉज इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कॉज. वन ऑफ माई कैंसर पेशेंट, ब्रेस्ट कैंसर, 35-year-old फ्रॉम बैंगलोर, वो जब आई थी उनका लाइफ में सब कुछ सेटल्ड है क्योंकि आई बिलीव दैट कैंसर हैज अ रूट कॉज विच इज इमोशनल ट्रॉमा. ओके, सब पेशेंट्स में कुछ ना कुछ रहता है विच इज बॉदरिंग देम. So when I was asking, she was not telling anything. She told everything is okay in my home. I'm earning. She's in a MNC earning well. बहुत अच्छा है उनकी life, but उनको cancer आया है. So last में on the 23rd day she came and told me, why you were asking like that doctor? आप क्यों पूछ रहे ऐसा? So मैंने बोला कुछ ना कुछ रहेगा क्योंकि आपका body में सब सही है, कुछ ना कुछ गलत है. That is why this abnormal change is happening. तो तभी वो बोल रही थी बचपन में सब मुझे खाली बुलाते थे. Everybody call us Blackie. Then it has struck her so much. She went to Bangalore. She spent so much money in bleaching her skin. When she came to me, she was not looking black. She was looking fair. But we bully people. आप मोटे हो, आप पतले हो, you काली हो. These things can struck a chord in the patient's mind, and that can induce continuous flight or fight. जो physiology में हम पढ़ते हैं. If you are on a constant flight or fight, inflammation triggers in the body. Because inflammatory markers हम जो निकलते हैं, it is not a blanket approach. कुछ inflammatory markers are pro-inflammatory in some conditions and anti-inflammatory in some other conditions. If you look into immunology, so we cannot just blindly say CRP ज्यादा है मतलब उसका मतलब ये है कि you are having inflammation or you are not having inflammation. So that is why naturopathy has a larger role in understanding cancer because we do precision medicine. आप personalized care कर सकते हो. हर व्यक्ति की genetic mutation के कारण अलग-अलग होता है. It is not the same. If it is same, there will be no cancer actually. We can treat cancer very well. Because it is different, we are the people who can understand why there is a cancer. And third thing, treat the whole person. जब पेशेंट रूम पे आएंगे, आपको खाली पेशेंट को डाइट नहीं बताना है, पूरा फैमिली को डाइट बताना है. क्योंकि मैं बिरयानी खाऊंगा, मेरा बीवी खिचड़ी खाएंगे तो झगड़ा होगा. तो कैंसर से पहले मुझे मार के फिर वो मरेगी. Right? So we need to educate the whole family. We need to make sure that everybody is eating the same kind of food. Because हम लोग abnormal और normal करके रखे. There is nothing called abnormal or normal in medical science. It's a philosophical tenet. Beauty lies in the eyes of observer. हम जैसे देखते हो, I don't know, understand, explain in Hindi. So you understand that. So okay, beauty lies in the eyes of the observer. So in medicine, there is nothing called normal blood sugar, normal cholesterol, because people behave differently. There will be people coming with 200 blood pressure, will not have any symptoms which is there in your keloids. That doesn't mean that you should be also bluffing. You should be cautious, but I'm saying that that is not universal. In similar way, patient को सब normal करने के लिए उनके environment को भी हमको बदलना चाहिए. I tell first thing, strict no visit from the relatives. रिलेटिव्स क्या करते हैं, 1 किलो एप्पल लेके मैंने 1 साल जो काम किया उनके ऊपर पूरा खराब करके निकल जाते हैं. ऐसा क्यों आया आपको, कितने अच्छे थे आप. These are the things which makes the patient feel more guilty and she'll die faster than the disease killing her. And also second thing what I tell to them, don't self pity yourself. क्योंकि हम जब डाइट में जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑफ अस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम डाइट किए होंगे, हम डाइट में जब जाएंगे हमारा प्राइमरी इमोशन क्या होता है, मैं कितना बेचारा हूं, राइट, मैं कितना खाता था, अभी मैं कितना नहीं खा रहा हूं, आई एम सो पुअर पर्सन. सो यू सेल्फ पिटी योरसेल्फ. So we need to remove that cord from that particular patient. And nobody sympathizes at the patient. Only empathy is needed, no sympathy. So we create that kind of environment, treating the whole person. Then what we have, putting the healing power of nature. Because patients come to us with an idea from medical records.
क्योंकि जब पेशेंट आएंगे हमारे पास हमारे रूम पे, दे विल बी एक्सप्लेनिंग मेरे को कैंसर हुआ था, मेरे को मैस्टेक्टमी किया गया, फिर मैंने वो HCG में जाके वो किया, लेक शोर में जाके ये किया, फिर मैंने यहाँ पे आया, फिर मैं लंदन चला गया, मेयो क्लिनिक में गया, फिर वापस मैं आपके पास आया हूं. So everything they tell, there will be bunches of reports. Then I fold that reports on the side and ask them, other than these reports, what is your problem? Many times patients don't have an answer because they relate themselves with the diagnosis and the bunch of papers. That is the first code you need to break. First thing you need to cut is they are not their diagnosis. So for that, you need to have the healing power of nature, because of course the diagnosis, the blood markers means something to you as a doctor, but doesn't mean anything to the patient. For the patient, हमको healthy रखना है. It is a state of being, not a every day I am going to be healthy. I can be unhealthy today, कल मैं healthy रह सकता हूं. So वो जो state में हमको उनको लाना चाहिए, the self healing capacity of the body, every day they need to correct that. Then the doctor as a teacher, मैं जो यहां पे जो बात कर रहा हूं, फॉर एवरी पेशेंट इन माई रूम आई डू सेम पब्लिक टॉकिंग फॉर 1 hour 1.5 hours. ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स, ओनली स्लाइड्स नहीं रहेगा, आपको एक चीज एवरी डे यू नीड टू कन्विंस द पेशेंट, एंड दे कम विद डिफरेंट सिनेरियोस. इसलिए मेरा कंसल्टेशन विल बी 1 to 1.5 hours. ये कहां से मैंने सीखा? पहली जब मैंने इमीडिएटली पास्ड आउट फ्रॉम मेरा BNYS, आई जॉइंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी. सो वहां पे बाबू जोसेफ सर वाज माय डायरेक्टर. सो ही टोल्ड मी ऑन द फर्स्ट डे, मैं पहली बार फ्रेशर होके जा रहा हूं, आपका पेशेंट आपका रूम से 45 मिनट से पहले बाहर नहीं आना चाहिए. कंसल्टेशन में जब आएंगे तो मैं अंदर बैठा, पेशेंट भी आके बैठ गए, मेरे को पता ही नहीं क्या बात करना है पेशेंट से. मैंने कुछ कुछ जितना मुझे आता है उतना मैं पूछ लिया, फिर मेरे को कुछ पूछना है, पेशेंट बुढ़ा है इसलिए मैं कुछ भी फ्लर्ट भी नहीं कर सकता हूं. अगर खूबसूरत लड़की निकला तो आई विल आस्क लाइक गिव मी अ नंबर एंड ऑल द स्टफ लाइक लेकिन पेशेंट इज अ ओल्ड मैन, सो आई कैन नॉट फ्लर्ट विद हिम आल्सो, ही विल कंसीडर मी आई एम गे, सो मुझे वो भी नहीं करना है. तो मुझे पता ही नहीं, बाहर से वो देख रहा है. मैंने उनको बोला थोड़ा बैठिए 45 मिनट, मेरा डायरेक्टर देख का होगा. सो हम दोनों बैठ रहे हैं, कुछ कुछ बात कर रहे, फिर वो पूछा आपका हिंदी कैसा है, मैंने बोला बहुत गंदा है. मराठी आते हैं क्या? मैंने बोला नहीं आते, मला माहिती नहीं है. सो आई वाज टेलिंग ऑल दोस थिंग्स एंड ऑल and 45 minutes I thanked him, he went out. So same thing was happening for 5-6 days, 10 days, 1 month, 2 months, because I don't know. Sahu sir also can understand this feeling of mine. So we don't know what to talk to the patient, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में हमको सिखाया नहीं कि पेशेंट से क्या बात करना है, और why naturopath should talk for long time. फिर मुझे अभी समझ में आ रहा है 1.5 hours भी बस नहीं हो रहा है टू अंडरस्टैंड द पेशेंट, क्योंकि disease is not about blood markers, not about scans, not about the patient's symptoms. Disease about वो लोग क्या कैरी कर रहे हैं, from where they bring this disease, what are the contributing factors for the disease. उसको अंडरस्टैंड करने के लिए you need to connect with the patient. You need to understand the patient should be openly telling everything to you. From sexual abuse to domestic violence to how he identifies himself, ये सब आपके साथ शेयर करना है, तब जाके you will understand the patient as a whole. So that is why the physician as a teacher is very, very important for us, one of the important philosophy. And finally, prevention is better than cure. When you are treating a cancer patient, you are preventing him from cancer-related complications. When you are treating a heart patient, you are treating him from heart-related complications. Every patient in front of you, you are doing a prevention. ये करना है. And उसके साथ kleshas, the philosophical tenet from yoga, very, very important. The raga dvesha abhiniveshas, the fear of disease and fear of death, two important causes of death in patient. Because when the patient जब मानते हैं कि I'm going to die, you cannot recover him. So you need to remove that klesha. हम लोग पतंजलि योगा सूत्र, I'm a South Indian, it's very difficult for me to learn all this Hindi and write in the exams. So मैंने तब बोल चुका हूं 3rd year में. फिर उसके बाद कभी इसका इस्तेमाल नहीं करना करके शब्द करके मैंने बाहर आया कॉलेज से, लेकिन अभी मेरे जिंदगी में रोज काम आ रहा है. बिकॉज first thing what you do is like yoga chitta vritti nirodha, cessation of the mental modifications of mind. People come with lot of modifications. They come and present negative scenarios. You need to stop the chanjalada. And with respect to cancer, you need to remove the fear of disease. You need to remove the fear of death. ये पहले 3,000 साल पहले लिख के गया है वो लोग, हमको पता नहीं है कैसा यूज करना है. So these are the things which we need to learn if you really want to become a yoga naturopathy physician. Otherwise, you are a therapist. Physicianship is you leading the show, not about patient asking you मुझे यहाँ पे मसाज दे दो, acupuncture करेंगे क्या आज? No. Then you tell them go to a spa. Okay.
Then further, एक disease की origin and how we can reverse a disease we need to understand. If you just look into this, you can understand we have a self-healing capacity and unity of disease, unity of cure, chitta vrittis and kleshas. These are the 5 tenets जो मैं यूज करता हूं. So उसमें पहला चीज है कि when we are normal, we get a constant disturbance. Constant disturbance can be anything. It can be lack of sleep, lack of exercise. It can be torturing husband or a torturing wife, shaitan bacha. It can be anything. Anything which constantly disturbs you can lead to irritation inside your body. That is why जब हम बच्चे रहेंगे like or we see a small kid, उनकी skin बहुत अच्छा soft रहेंगे. We like to touch the skin of a kid. हमारा skin buffalo जैसा है. क्यों? Because we have constant irritation and we only have protection mode inside our body. Our cells has only 2 functions. One is growth, another one is protection. Growth will be only prioritized when you are not in a threatened atmosphere. अब हमेशा threatened atmosphere में रहा तो flight or fight will be dominant. You will be continuously producing stress markers and the hormones related to stress, your cortisols. Whereas if you are in a very conducive environment, that's why in first year when I was in love with my girlfriend, what chemistry in between both of us, because we both are secreting oxytocin, dopamines and all those things. When we are in final year, it's only IL-6, CRP, ESR, because हमको कुछ बचा ही नहीं बात करने के लिए. Same with शादी की पहली साल, it will be so nice, all करवा चौथ and all you put on Instagram and all the stuff. And when the 10th year, you beat the husband with the same करवा चौथ वाला thing, because you get irritation and the irritation is very constant and that can lead to inflammation in the body. And all of us here sitting here, हम कहीं ना कहीं inflame होते जा रहे हैं. Like we have something going on in our mind or in our body. Anything. कब ये बंदा छोड़ेगा, आज क्या खाना मिलेगा दोपहर को, और अभी हेल्थ मिनिस्टर आके क्या बोलेगा, और कुछ काम देंगे कि हमको छत्तीसगढ़ में अगले साल भी आना पड़ेगा क्या, मैंने गलती तो नहीं किया BNS करके, ये सब चीज हमारा मन पे चल रहा होगा. This is also irritation and inflammation inside our body. So that when constantly go for a longer time, it becomes chronic inflammation. So that's why you get all the diseases inside your body. And then the chronic inflammation goes for a longer time, you get degeneration. Degeneration is cancer or autoimmune condition. So iska reversal aisa hota hai ki you need to understand what is healing crisis for reversing a patient's condition. So when you are treating a cancer patient, they come up with exorbitant immune reaction. Hamara hospital mein fever aayega, they get rashes in the body, they re-experience everything. That is called Herring's law of cure. Aapka first year PNC mein hai. Healing happens from sender to side to sender, from the bottom to top and from top to bottom. So that is Herring's law of cure. You re-experience every symptoms while you're treating a patient. So from degeneration, you will get into chronic inflammation. From there is inflammation, then discharge and normal health. The first year car picture of inflammation and regeneration, what you learn, that is your textbook. But we don't have the emphasis to use that in our clinical practice. And this is the causation of a disease. And we try every day to revitalize this particular process so that we can reverse the patient's condition. This philosophy hai. If you imagine Baba Ramdev, Sadhguru, Sri Sri Ravi Shankar, why they have a lot of fan following? Which university they have graduated from? Not SDM, not Chhattisgarh, not SRKMC. They graduated from the school of philosophy. They speak philosophy. They can speak for hours together because people don't have anybody to talk. That is a reality. When patients come to us, वो लास्ट में कब उनकी पति से या बच्चों से बात करे होंगे उनका याद ही नहीं है. Because we don't have a companionship. इंडिया में मेंटल हेल्थ करके एक चीज ही नहीं है. ओनली योगा जो करने वाले एलाइट लोग हैं. आम आदमी इंक्लूडिंग BNS people don't do yoga. Other than it is mandatory if you are in college. Otherwise आज सुबह योगा कौन कौन किया यहाँ पे? Only Vikram Pai didn't do. So most of us are not done. We are BNYS students and doctors. I also haven't done. I had nice dosa and paratha because I'm North India. I want to have that North Indian food. सब कुछ खा के आया हूँ बिना बेशरम. I'm standing here without doing yoga, and we are telling that mental health की चीज यहाँ पे हो नहीं रहा है, and mental health is a primary cause of disease. That is a klesha, yoga chitta vritti nirodha. We learned in textbook, but we do not know to apply that in our practice. And then going further, can you move this slide? It's not moving. Okay. So that is where हमारा beautiful philosophy आता है, unity of disease and unity of cure. एक disease होने में there are 4 layers, 4 layers for a disease.
उसकी सबसे फर्स्ट लेयर है इंडिविजुअल फैक्टर. एवरी पर्सन इंडिविजुअली कैरी दैट. आवर इमोशंस. इट कैन बी इनजस्टिस, फियर, ट्रॉमा, लो वाइटैलिटी. व्हेन अ पर्सन इज नॉट एट ऑल फीलिंग हैप्पी. सब लोग यहां बैठे, कुछ लोग हंस के बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं. सो एवरीबडी हैज समथिंग गोइंग इनसाइड आवर माइंड. दैट इज लाइक somebody will be fearing low, somebody will be feeling a fear, somebody will be feeling an injustice feeling inside our body, and that can trigger physiological changes inside our body. अगर अब ऐसे सोचा, like when we want to reverse diabetes for example, हम डायबिटीज को तब रिवर्स करते हैं, एंड रिवर्सल इन द सेंस हम लोग अगर ब्लड शुगर को लो करने के लिए बात कर रहे हैं तो यू आर आउट ऑफ नेचुरोपैथी. You should think about what is triggering the blood sugar. Same for cancers. Cancer is a hypermetabolic cell. That means वो cell ज्यादा metabolic है, ज्यादा खाना खा रहे हैं compared to a normal cell. So there are only one occasion where we will be not producing so much sugar inside our body, so much ATP inside our body. That is while we are sleeping. क्योंकि brain function only in glucose. Whenever you take a PET scan, your brain always काला दिखता है because brain always contains sugar. Another part is your urinary bladder or your scrotum. Because both this area always contain sugar. Rest of the body does not contain sugar. अगर आप सोते हुए भी कुछ सोच के सो रहेंगे तो you are hyper metabolic inside your body. You are continuously producing sugar. That is what the feeling of injustice or fear. अगर मेरा workplace में कुछ harassment चल रहा है मेरे साथ, I don't feel positive to go the next day because it is only money I'm going. I'm making myself available in 5 Lotus Indo-German. I'm not taking an example. Or I'm making myself available in Miracle. Because if you are a toxic boss, your people are slowly getting the fear or injustice thought process. And when you work in a toxic environment for 10 years, or when you are getting married to a toxic person for 25 years, or when you are having some relationship issues for longer time, that is nothing but metabolic disarrangement inside the body, which is not visible at this point of time, but you are slowly changing. हम लोग सब लोग पतले थे when we were 18. When we are 38 today, we सब लोग become mota. And right in this naturopathy day, lose weight naturally is the theme also by government of India. शर्म आना चाहिए हम सब लोगों को, right? क्योंकि we know what is a cause and we are not treating it. And cancer is also something where it starts from the personality traits. If you are a type 1 personality, मुझे सुबह उठकर योगा करना ही पड़ेगा. If you think that, if you cannot let go your yoga, you are a wrong person. Or if you are doing yoga like this, आज मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, आफ्टरनून की केस में बहुत करना चाहिए. So if you're thinking like that, you are not shifting your mental modification. You are not doing yoga, you are doing an exercise. And similar way, if you are looking into a food plate, you can only see diabetes, cancer, hypertension, you are again not relaxed. Instagram is making us like that only. All the food plates are no more food plates, it is all bunch of disease plate. So this thing can lead to physiological change inside our body, and this will be fueled by the environmental factors. Isliye, whenever a cancer patient is coming, if you're just correcting their diet, correcting their exercise, correcting their sleep, it will not get healed. The patient will not get cured. We will be wondering, fasting to book mein likha hua hai, fasting can cure cancer. Why it is not happening with my patient? Because you are just correcting the environmental factors. The individual factor is still remaining active in the body. Unless you heal the patient, unless you heal the individual emotional trauma which is there in the patient is not going to get healed. Maybe when you introduce diet, when you introduce certain things, suddenly they feel good, but they'll come back with the same disease after 10 days, after 10 years, after 5 years. And then comes the disease. And most of the modern medicine approach start from here. Okay, when you have a name, because sometimes there are patients with me who just get some kind of mass in their breast. So they go to a hospital, they do a checking, they do a mammogram or they do a ultrasound, and they say that, okay, it is only benign now, you don't have a diagnosis now, let it become cancer, then we will treat. Many of us encounter such kind of situation because it is not the limitation of modern medicine, that is the strength of modern medicine. You can treat a condition only if there is a disease present or a diagnosis available. But we are the people who are having a huge role of preventing all these things together so that you don't get disease burden. When every year, when there is a 10% increase in cancer, 10% increase in diabetes, 10% increase in hypertension, it is not the modern medicine failing, it's a collective failure of Ayush as a system. Because we do not pay justice to what we have learned and what we are supposed to do. Cancer can be reversed, diabetes can be reversed, hypertension can be reversed theoretically, because we have only limited sample size of people doing it in action.
When hundreds and thousands and lakhs of people come together and do, हमको definitely we can reduce the disease burden of our country. India का 3.8% GDP is the current health budget, which is too much. We need to reduce. हमारा collective responsibility होता है. That is why Park and Park textbook is the most important Bible for yoga and naturopathy physician. आपका community medicine and social and preventive medicine textbook. And हमारा treatments जब काम आता है, when you correct the emotional factor with counseling, spirituality and coping strategies, when you correct the environmental factors with long-term lifestyle changes, not just go and do a change which patient cannot adapt. जो आप खुद नहीं कर सकते हो, patient भी नहीं कर सकते हैं. तो जो चीज आप कर सकते हो वही बोल दो. Then short-term conservative measures, like if there is a diabetes, uncontrolled diabetes, patient will be on insulin or anti-diabetic medication for a while, but you can reverse that after a while of correcting these two factors. And then alongside हमारा treatments भी उसमें काम आ जाएगा. If you just believe in therapy-based approach, you are not going to end up in a proper stuff for people. So हमारा cancer reversal is based on where we fit into the spectrum of cancer, not about are we better than allopathy or are we better than homeopathy. The causation factor में, hallmarks of cancer में, what is your role, where you fits into the reality. When you start thinking in that line, specialty practice in naturopathy is a possibility. Autoimmune condition में आप कर सकते हो, diabetic reversal कर सकते हो, hypertension reversal कर सकते हो. If you fit yourself into the spectrum of a disease, that is what unity of disease and unity of cure for us. This is what Lewis Kuhn meant by unity of disease and unity of cure. Because we do not understand it completely, we are totally misguided and we are here today. Can you move to the next slide? Yeah. So now what is cancer is something which we are going to understand. How much time I have? Yeah. Okay. So first thing, the debate which happens is whether cancer is a genetic disease or a metabolic disease. If it is a genetic disease, the problem is we have 3 lakhs odd genes in our body and every genes mutate at a point of time. We cannot control the mutation of genes just like that. Hundreds and thousands and lakhs of medications, target therapies or immunotherapies can come. We cannot tackle the mutation. That is why the patient comes with a different tumor the next time, or there is a metastasis after some time, some point of time. This I am speaking based on pure experiential perspective, what I see in my hospital. Okay, so there are a lot of genes, and out of that, 70% of the genes can become an on-go gene, which can trigger cancers inside our body. So literally, we cannot identify all the genes which is promoting cancer. We cannot tackle that. Whereas if you look into the metabolism part of cancer, it is very much a thing that whenever you study how a cancer cell behave, cancer cell choose a pathway because it always requires sugar. It always requires glucose. If you do not give glucose, it converts glutamine into glucose and start using it. That is why when somebody asks, can I have non-vegetarian when I have cancer? The answer would be on which phase of cancer you are in. Whether you are in treatment phase, relapse phase, remission phase, उसके हिसाब के आपको उनको protein चीज को modulate करना पड़ेगा. And similarly, cancer produce 3 metabolic pathways. One is aerobic glycolysis. Cancer can produce sugar in the absence of oxygen. Normal cell, हमारा oxygen के हिसाब से we'll be using that and we'll be producing ATPs. Cancer can go in Warburg effect without even oxygen. Cancer can produce glucose for itself. It affects glutaminolysis. It affects your glutamine pathways and 1 carbon metabolism. This will be helping the cancer to simply producing an ATP from amino acids, nucleotides, fatty acids. कुछ भी चीज आप देख दो, cancer is a brilliant cell inside our body. Survival of the fittest. It can produce energy for its survival. किसी को भी मार के वो जिंदा रह सकते हैं. So there is no one size fit for all phenomenon in cancer care. आपको आपकी पेशेंट के साथ बहुत डीपली वर्क करना पड़ता है टू अंडरस्टैंड उनकी मेटाबॉलिज्म कौन सा स्टेज पे है, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू चेक, आई विल शो यू. सो व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड कैंसर फ्रॉम अ मेटाबॉलिक पर्सपेक्टिव, you have wider chance of reversing that particular condition, because metabolism can change. It is not the food which is changing, right? I am now emotionally overwhelmed and talking to you. मैं बहुत express करके बात कर रहा हूं. Even if I'm not having my breakfast, even if I'm fasting for 3 days, I can speak with this energy because this is motivated by my brain. My brain thinks how much I should be energetic, how much I should be not energetic. The moment I see pathology textbook,
when I see forensic medicine, I like it because it is something interesting inside that textbook compared to forensic medicine. This is the brain which is triggering. So your metabolism is impacted by your emotion. The first factor, the individual factor, the emotional trauma which corrects your metabolism every day. So if you can remove the root cause like a metabolic dysfunction, the answer for cancer is very much closer. I'm not saying 100%. We are very close to the finding an answer for cancer. At least we can manage, like diabetes, we can manage for 20 years with cancer being present inside our body. क्योंकि क्या करना है, मेटास्टासिस को प्रिवेंट करना है तो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना है, because metastasis is nothing but evading immune surveillance. From a single breast, it goes to your lymph nodes. From your lymph nodes, it goes to your liver or your bone, because it is constantly deviating your immune system. हमारा job is to put back immune system into action. हमारा job is to starve the cancer cells, not just by not giving sugar, also correcting or modulating your diet often. So some patients of mine are on keto diet for 3 months, then suddenly I shift them into paleo, then I'll give them on a moderate calorie deficit diet. So there is no one perfect diet or perfect supplement for cancer. And we should understand cancer from beyond the point of the term cancer. Just consider that as a metabolic dysfunction. How you reverse diabetes without fear? Because when cancer is coming, as a doctor, you are also scared because the end result is death, or that is what has been taught to us. But diabetes, we don't get that kind of panicity because we have never seen death anywhere in our textbook for diabetes. It may be either in nephrologist hand or neurologist hand, they'll be dying, not in diabetologist hand. So we need to keep that particular thought process out from our brain, work on the metabolism constantly. And any patient मेरे पास जो आएंगे उनको नहीं ऐसे बोलूंगा, I am not treating your death. मैं आपका मौत को इलाज नहीं कर रहा हूं. You will die, I will die. What I am trying to do is continuously monitoring and maneuvering आपका metabolism को मैं maneuver कर रहा हूं. We may be successful, we may be a failure because I only know 70% of what I do. 30% मुझे पता ही नहीं है, आपको ऑन्कोलॉजिस्ट को भी नहीं पता है, आपको सर्जन को भी नहीं पता है. Everybody does perfectly what they know, for what they believe. That is what our Hippocratic oath, right? You do no harm, but you do whatever you believe that is beneficial for your patient, whether it is scientifically, logically, clicking some bell in your brain. Okay, so till 1927, this was considered as a scenario. Cancer was considered as a metabolic disease. A lot of money has been invested, and even Otto Warburg has received 2 Nobel Prizes for the metabolic Warburg effect, basically. Lekin after 1970, there was a lot of money being pumped on proving cancer as a genetic disease because it can become a treatable disorder when you identify genes. Okay, so we have moved away from metabolism as a trigger for genetic change to genetic change as the whole cause of cancer. That is why we are dying and we are killing in both ways. Okay, so I'll just skip this. So if you look into cancer, whether you want to make it as a metabolic disease or genetic disease, okay, we all learn from our 10th standard, 12th standard, we all draw the cell key structure. उसके बीच में क्या रहेगा? Nucleus, and we have used the penicillin and cytoplasm, endoplasmic reticulum, all those things we have done, right, as a child. So, and we believe that nucleus is the center point of the everything. Nucleus is only it divides cells into multiple cells and you form cells. But if you just look into this study from Thomas Seyfried, when there is a normal nucleus, normal mitochondria, the cell divide into normal cells. When there is a cancerous nucleus, cancerous mitochondria, the cell divides into a tumor cell. When there is a normal mitochondria and a cancerous nucleus, the cell still divides into a cancer cell. Whereas when the nucleus is normal, mitochondria is dysfunctional, you develop tumor cells. That means it is not about your nucleus, it is about mitochondria. Because why we call mitochondria as a powerhouse of the cell? It's all about energy metabolism. I'm speaking to you because I'm burning my ATP somewhere. Brain contains the largest amount of ATP. I'm burning my ATP. My mitochondria should be stronger enough to tackle and handle my things. That is why Warburg has told the respiration shift, aerobic glycolysis reflects mitochondrial respiration defect. That is why when you have a normal nucleus, if your mitochondria is dysfunctional, you are going to develop cancer. So our entire energy should be, and the gene theory what comes from is the nucleus-based approach. Of course, the nucleus gets changed because of the dysfunctional mitochondria over a period of time.
हमारा करेक्शन यहाँ पे होना चाहिए, हाउ टू करेक्ट द एनर्जी मेटाबॉलोमिक्स इनसाइड द बॉडी, एंड दैट कैन बी कंप्लीटली पॉसिबल बाय मेंटल हेल्थ चेंजेस, dietary changes, environmental changes, and of course some support from modern medicine, because we do use low dose chemotherapy, we do use target therapy, we do use immunotherapy, we recommend people for surgery, but in the proper proportion, if it fits into the realm of what we are doing, not because that is being glorified or this is not being glorified. You should understand as a physician आप क्या कर रहे हो आपकी पेशेंट के साथ, कहां से आप ट्रीट करना चाहते हो, व्हाट आर द टारगेट यू आर ट्राइंग टू फिल इन. यू आर नॉट ट्राइंग टू गिव अ टेम्पररी सोल्यूशन. आपको आज की सोल्यूशन करना है तो यू कैन डू अ सर्जरी एंड अ कीमोथेरेपी इन 3 साइकिल्स, यू विल बी फीलिंग अ गुड पेट स्कैन विल कम. But in another 6 months or 12 months, the same patient will be coming with a distant metastasis in the liver or the bone. This is a story, most of the thing. And जितना भी chemotherapy drugs की studies देखो, there is only 5 year survival data. अब जितना भी studies निकालो, more than 5 years you don't find survival data, because that is a normal timeline we fix for a cancer patient. Okay, so and then as I told, cancer is totally about DNA instability. हमारा सारे ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है जब आपका डीएनए इंस्टेबल होके, म्यूटेशन होके, यू गेट डिसीजेस. आफ्टर दिस इंस्टेबिलिटी इट कैन बी कॉल्ड एज डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, वॉट एवर नेम यू वांट टू गिव, इट हैपेंस आफ्टर दिस. आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है यहां से. But there are a whole lot of line in the first year of our BNYS, that is your biochemistry. There is something called methylation process. Methylation is something which triggers genetic stability or instability. So let us say most of my patients, when they come, I look into their metabolic pathway. If there is a defect, I'll show you what and all I'll see, and you can also use that, not just for cancer, for any condition. All of us sitting here, you can check your homocysteine levels just like that. Homocysteine is glorified as a cardiac marker, but it is a metabolic marker. It is a marker जो आपकी genetic instability को आपको दिखा सकते हैं. If your homocysteine level is increasing, that means your DNA is getting unstable. So आप यहां से कैंसर आने के बाद, you remove the cancer, burn the cancer, radiate the cancer, does not make any change in here. This is the root cause of a disease. The diet what you eat, if it contains B12, B2 and B1, it will be converting this particular process and DNA is stable. आपका डाइट, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग आके बोलते हैं मैं वेजिटेरियन हूं डॉक्टर, आई एम ए वेजिटेरियन, डू योगा, व्हाई आई गॉट कैंसर. यू गॉट कैंसर बिकॉज यू आर अ वेजिटेरियन. I'm not making a blanket statement again. You lack B12 compared to a normal non-vegetarian in your diet. Either you should be supplementing B12 in your diet or find vegetarian sources of B12 and put it inside, because आपका methylation will not be completed without B complex vitamin inside your body. Most of the disease. This is one diagram which I use. I explain this to my patient where you stand wrong, because वो patient जब आएंगे, we do a set of blood test. With the blood test I explain आपका अंदर की cell कैसा काम कर रहा है. And then we convert them. It is like converting a person from Hindu to Muslim or Muslim to Hindu. You need to make the belief system so strong, logically strong, जाकि उन लोगों को believe करना है the self healing can happen irrespective of what is shown in your medical records. Okay, so at this point of time, what is happening? Somebody is treating cancer as a genetic disease in some hospital. Somebody is treating cancer as a metabolic disease. Patients are dying. Every year, there is an increase in 1 lakh people dying with cancer. So, usko humko correct karna hai, to we need to bridge both this concept. When there is a metabolic problem, metabolism can lead to a genetic disability, which will lead to cancer. That is what this diagram clearly says us. It is not the gene changing just like that. आपका metabolism पूरा change हो रहा है, उसकी वजह से आपको gene change हो रहा है. आप खाली gene को target करके उसको सुधरने के लिए कोशिश करेंगे तो there will be another gene which is getting mutated. And there is another gene getting mutated. How we are going to answer all these genes getting mutated? हमारे पास answer ही नहीं रहेगा. Target the roots. When you target the roots, your chemotherapy works like wonders. Your surgery works like wonders. Your medications work like wonders. But you're not allowing or you're not knowing to target this. हमारा problem वहां पे हो रहा है. So we need to. Okay. So आजकल इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी क्या चल रहा है? जैसे कि हमारा तमिलनाडु में भी बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है. पहले 6 फ्लोर में ओनली सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी चलती है, राइट. सो देन यू गो टू द फ्लोर टू डू योगा टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम कीमोथेरेपी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, व्हिच इज नॉट इंटीग्रेशन, व्हिच इज बिट्स एंड पीसेस. यू गो टू सबवे, पिक एंड चूज व्हाटएवर यू वांट टू ईट एंड पुट इन द सैलेड एंड ईट इट. वैसा नहीं होता इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट.
integration of all these concepts together, tab jaake you can integrate things. So now if you see, conventional medicine believes in clinical trials, disease focus, single target, fighting with the tumor. And these are the therapies. Whereas TCIM, traditional complementary and integrative medicine, believes in patient experience. मेरे पास ऐसा patient है कि they have done surgery, they have done radiation, they have done multiple chemotherapies, they have done all the therapies what we do, उसके बाद भी उनकी ट्यूमर बढ़ रहा है. अभी हम लोग उनको पूरा चीजों को बंद करके खाली डाइट पे रखा है. दैट इज ऑल्सो ऑन पेशेंट ट्रस्ट. शी इज डूइंग वेरी वेल. उनकी ऑल द मार्कर्स इज इंक्रीजिंग. Every now and then tumor is increasing, but she's not feeling any pinch of it. Technological bias. We are not able to understand what the patient is going through at this point of time. That is the only thing. उसका मतलब ये नहीं कि we are failing. कुछ टाइम पे आपको कुछ नहीं करना is also इलाज. Every time डॉक्टर के पास आया तो आपको कुछ ना कुछ करना है, ऐसा मतलब ही नहीं. You can just go with the patient experience. Then multiple symptoms, multiple causation को आपको इसमें लाना है, तब जाके you can treat your patients. But आजकल एक huge gap है इस दोनों के बीच में, because an oncologist does not understand what I am telling. I cannot understand what he is telling, because if like somebody like an oncologist is coming, we spent years and years together in understanding tumor alone. We come from a GP practice perspective. हम लोग ना सब complex बनाने के लिए कोशिश करते हैं, whereas super speciality will become so minute and try and understand the roots of what they believe to be right. So it is not a problem of all of us. It's a problem of where we belong to, our thought process. We do not want to think out of the box. So in Miracle, हमारा hospital में, this is a line of approach what we do. This is a root cause which we believe cancer is happening from. Psychological stress as the primary thing. Yeah. And second thing, mitochondrial dysfunction. And उसके बाद vitamin C deficiency. Vitamin C deficiency in the sense, हम animals can synthesize vitamin C by themselves. हमारे पास उसकी capability नहीं. We cannot synthesize vitamin C. हमको विटामिन सी बाहर से लेना पड़ता है. कैंसर इज ए मॉडर्न डे स्कर्वी. मैंने जो पिक्चर पहले दिखाया पूरा ऊंड, अंदर भी कैंसर वैसे रहता है. सो जब दांत में से खून निकलता है, यू यूज आंवला और दैट लेमन एंड ऑल टू टैकल स्कर्वी. इन द सिमिलर वे, vitamin C deficiency can also lead to cancer, and if you put vitamin C on a higher dose, that can help in treating cancers. Then tissue hypoxia. As I told earlier, Warburg effect. Cancer cells produce ATP in the absence of oxygen. So tissue hypoxia can also be a relation between tissue hypoxia means the only currency in our body is oxygen. आप diet दे दो, diet के end product is oxygen. If you give pranayama, end product is oxygen. If you give vitamins in the veins, the end product is oxygen. So tissue hypoxia को हमको tackle करना है. Then acidic microenvironment, जैसे कि tumor changes the alkalinity of its surroundings because it cannot survive in alkaline microenvironment. उनका pH को उनको बदलते रहते हैं जाकि they can survive. So उसके ऊपर से हम दूध में हल्दी डाल के, शक्कर डाल के पिया तो the moment you put sugar into the milk, it becomes acidic. And most of us do not have the capacity to digest milk. And white rice, white sugar, anything in the white triggers acidic microenvironment inside the body. And then eating too much of fruits, again it triggers, because if you just look in fruits, looks nice, colorful, but too much of anything is bad. If you just, some of us, we do fruit fasting करेंगे हम लोग. सुबह एक watermelon, शाम को एक papaya and berries, ये सब चीज हम खाते रहेंगे. You are eating more than you are eating in a normal day because you feel pity on yourself because I'm fasting on fruits. So आपका calorie level जैसे बढ़ते जा रहा है, you are again getting. And if you look into 36% of my patients, or in the India, if you look, everybody has a fatty liver, non-alcoholic fatty liver. That comes from excessive grain eating of Indians. 75% हमारा energy coming from cereals, coming from carbohydrate sources. That is another reason why we get and oxidative stress and dysfunctional autophagy. That मतलब autophagy करने की टाइमिंग हम नहीं देते हैं. कुछ लोग हम 2 रोटी खाते लेकिन 10 बजे खाते हैं और 11 बजे खाते हैं. So the gap between eating and not eating is very very less. So उसकी वजह से हमारा autophagy भी नहीं होता है. That can lead to lot of genetic level instability inside the body, and that can lead to cancer. We are treating from here. We are not even looking here. And then whatever is removing the cancer, because people believe cancer, not having cancer in the scan is the treatment. You can live with even having cancer in the scan, provided your metabolism is stable. Because all of us,
Today, every one of us sitting here, हम जाके एक PET scan अपने आप को निकाला तो there will be 1 or 2 cancers in every one of our body, because that has been inside the surveillance of our immune system. It is not affecting our metabolism at this point of time. But we are one among the 9 Indians, I showed you. Any time, any point of time, हमारा emotional trauma can hit that peak and we will be immune compromised. We are going to get cancers. And answer for cancer is not finding a medication, finding balance and self-discipline for all of us. And that is what we try and do. And that miracle, I'm just adding the slides to just show you that what are the possibilities of a naturopathic physician. So we do something called live blood analysis. You just take 1 drop of blood, put it under a dark electron microscope and see that how your blood cells do inside your body. This is very much naturopathic. You can check at live blood analysis. You can use that in your hospitals, not only for cancers. And we use dermal scans because mammogram induces tumor at some point. So we use dermal scan as an adjunct diagnosis if you find something confirmatory, because cancers are hypermetabolic. Hypermetabolic मतलब उनकी cells हमेशा गर्म रहता है. So in a thermal scan which we use during COVID-19 to identify whether you have fever or not, the same thing works for cancer cells as well. Be it your prostate, be it your lungs, be it your breast, it can show. Then these are the markers which we use हमारा hospital में. For all cancer types, we use CEA, carcinogenic embryonic antigen, CRP, CA 15.5 or 3 for breast cancer. For entire GI tract from your mouth to your anus, we use CA 19.9, CA 125 for ovarian tumors, PSA for prostate. And also, I already told, ferritin. Is normally we use ferritin, all the iron binding proteins and all. Ferritin is a marker for tumor because, as I told, cancer cells always like to have sugar. So there is something called Fenton process, again biochemistry. Cancer cell अपने territory में हमेशा iron को load बढ़ाते रहेंगे क्योंकि they can attract sugar in the presence of iron. So अगर आपकी cancer patient और कोई भी patient, जैसे कि normally हम जा रहे हैं कुछ therapeutic treatment के लिए, we need to check how is their metabolism. अगर उनकी ferritin levels बहुत ज्यादा है, मतलब उसका मतलब ये नहीं कि उनकी cancer है, उसकी metabolism is a problem. So we need to correct the ferritin levels. There are supplements which we can do for that. So वहां पे हमको modulate करना है उनकी iron intake and supplements which we can give for that. It's a prognostic marker जो हम use करते हैं. And उसके अलावा we use lactate dehydrogenase. So lactate dehydrogenase अगर उनकी level ज्यादा जा रहा है, if it is higher than 260 or so, lactate dehydrogenase it's a simple for your body is producing sugar in the absence of oxygen. Your lactic acid is getting higher and higher, which is a prognostic marker as well as a tumor marker. And also D-dimer, it's a dysregulation of clotting system, especially post-COVID. Those who had a jab, the D-dimer levels are very, very high, which is creating a dysregulation of immune system as well as a clotting factor. Then vitamin D. यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सबकी vitamin D कम होगा for sure. And vitamin D, हम लोग खाली vitamin D चेक करके हफ्ते में एक बार 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स लेने से कुछ फायदा नहीं है. Vitamin D should always be checked with vitamin D, ionized calcium and parathyroid hormone. जब vitamin D कम रहेगा, आपका ionized calcium भी कम रहेगा, parathyroid hormone सबसे ज्यादा रहेगा, because vitamin D shares a negative relationship between parathyroid hormone. So आपकी supplement ऐसा करना है कि your parathyroid hormone should reach up to 15. आपका अगर विटामिन डी 7 है तो पैराथायरॉयड हार्मोन विल बी समवेयर अराउंड 120, which is showing the metabolic dysfunction. So विटामिन डी आप हर दिन 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स, 20,000 इंटरनेशनल यूनिट्स सप्लीमेंट करते जाना है till your parathyroid hormone reaches the normal level, that is 15. And also you need to monitor, आपको hypercalcemia में नहीं पहुंचना है. 5.6 के ऊपर आपका कैल्शियम भी नहीं बढ़ना चाहिए. सिंपल विटामिन डी सप्लीमेंटेशन में इतने सारे बायोकेमिस्ट्री है, and this is the primary. And most of the cancer patients, when they come to us, their vitamin D levels are 6, 4, 2, 3. This is a very important pandemic or endemic in our country or epidemic in our country, vitamin D deficiency. Then CBC. So जो complete blood count देखते हैं हम खाली hemoglobin लेके छोड़ देते हैं. Your neutrophils and lymphocytes ratio. If your neutrophils versus lymphocyte ratio 3 के ऊपर है, मतलब there is an inflammatory reaction happening inside the body. We need to correct neutrophils lymphocyte ratio. And then liver function test. Okay, liver function test सबको करना है. Sometimes the liver function test will be completely normal.
and patient will not even have a ultrasound evidence for fatty liver, but he will have cancer, for example. So we have something called F5B4 score, FIB4 score, which uses your CBC and some part of your liver function test to calculate whether the patient is having a liver disease or not, or the possibility of having a liver disease. F5B4 score, वो हम use करते हैं. Then renal function, thyroid hormones, like whenever somebody is coming, check all their metabolic landmarks, metabolic workout they need to do. So, and then your B12 levels and homocysteine levels. When your B12 level is low, homocysteine will be always high. Had patients with homocysteine 236 or so, the normal levels is up to 15. The homocysteine level should not go lesser than 10, more than 15. आपको बैलेंस में रखना है. अगर होमोसिस्टीन बढ़ते जा रहा है तो उनको एल मेथिल फोलेट की जरूरत है, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड की जरूरत है पेशेंट को. सिमिलरली फास्टिंग इंसुलिन, कुछ पेशेंट को HbA1c, फास्टिंग ब्लड, एवरीथिंग नॉर्मल रहेगा, फास्टिंग इंसुलिन विल बी वेरी पीक, हाइपर इंसुलिनीमिया. In a female with thyroid dysfunction, hyperinsulinemia and PCOD is a typical triad for a future cancer. So if somebody is coming with only thyroid function, check their insulin, check their ultrasound for if they have a polycystic ovary or a uterine fibroid or something. It shows that there is a metabolic dysfunction. And that is why हम लोग जब आसना करवाते हैं, डाइट दे देते हैं, PCOD it goes off because you are correcting the insulin and metabolism inside the patient. Because we are treating a condition, we get blinded. हम क्या कर रहे हैं हमको पता ही नहीं था. Actually, you are treating cancer. Actually, treating a possible metabolic dysfunction inside the particular patient. So, yoga and naturopathy में 3 approaches है. One is treatments that aid elimination and vitality. अगर time हुआ तो बता दीजिए. I can continue. Okay. Treatments that can aid elimination and vitality, because toxemia is the primary root cause. Lower vitality, that is sluggishness in emotions, is another problem. Then supportive treatments priming the healing forces. Then philosophical oriented, because after a particular situation, if the patient's की scan ठीक से नहीं आ रहा, patient will get demotivated. अब बहुत कुछ कर रहे, कुछ नहीं हो रहा है, because their focus is on the scan. आपको constantly उनसे बात करना है, उनकी मन को scan से बाहर निकल के आना है, उनको blood marker से बाहर लेके आना है, तब जाके you become a successful yoga and naturopathy physician. So we used to treat all the elimination. We use enemas, we use detox by means of fasting. So the eliminative detox by sun baths, full wet sheet packs, this will be helping in supporting the eliminative channels. So what are the eliminative organs inside the body? So one is your intestine, lungs, kidney, skin. So what is the 5th one? That's your mind. Unless the mind is cleaned, you're still diseased. इसलिए enema करो, fasting करो, unless मन शांति है. If your man is not relaxed, you don't get proper relaxation for the whole eliminative system. That is why रात को नहीं सोया तो सुबह constipation हो जाता है, because your mind and body is connected. You get pimples in some periods. Pimples, you don't get pimples in some periods because your gut and pimples and skin is connected. Your lungs and gut shares the same microbiota kingdom. So we need to modulate everything together, not separately. खाली gut की treatment करके asthma नहीं निकाल सकते. You need to treat on the lungs also. You need to treat the mind also. So elimination is primary. These are certain treatments which we use in our hospital. We are an integrative medicine because we have allopathy as well as naturopathy license. So we use intravenous vitamin C, ozone therapies we use hydrogen therapies, and then we use a lot of vitamin D supplementations. And then we use coffee enema. Coffee enema is very good for strengthening your liver. Then we use colon hydrotherapy for other than the patients who are having a colon abnormality. Most of the other patients undergo colon hydrotherapy. We use a lot of cannabis, that ganja oils and other things for marijuana therapy for people. And then we use sodium bicarbonate because it's an excellent alkalinizer. All the what you take is nothing but sodium bicarbonate, your baking soda. So we use sodium bicarbonate enemas. We use oral drinking of sodium bicarbonate. If there's a patient with wound, cancer wound, we wash the wound with sodium bicarbonate because we alkalinize the wound by using baking soda for that particular patient. These are small tricks which you can use in a day-to-day basis for our patient. Then for anti-inflammation and pro-inflammation, immune boosting, and these are the things which we use these therapies which is there in naturopathy. These are for symptom management primarily. उसके अलावा
we have modern naturopathic approaches in our hospital. One is oncothermia, which is a heating therapy, which we specifically target the cancer cells, because cancer cells और normal cell के बीच में voltage difference होता है क्योंकि उनकी metabolism अलग है. Heat shock proteins जैसा चीज होता है कि that will not be active in terms of cancer patients. So we will be using this oncothermia to selectively heat the tumor cells. उनको natural apoptosis में लेके जाएंगे. लेकिन not one therapy is the glorious therapy. Everything works together. Okay. Then we use हाइपरबेरिक ओजोन, जिसमें हम 2 लीटर तक ब्लड बाहर निकाल के उसको ओजोनाइज करके वापस भेज देते हैं. वी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेड्स बिकॉज दिस कैन प्रिवेंट ट्यूमर इन्वेशन एंड मेटास्टासिस. देन वी यूज सोना बाथ्स विथ नियर इंफ्रारेड एंड फार इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम. सो हम नॉर्मल हीट यूज करते हैं नॉर्मली इन हॉस्पिटल्स. नियर इंफ्रारेड रेस, दैट स्पेक्ट्रम ऑफ नियर इंफ्रारेड इज गुड फॉर प्रिवेंटिंग पेन. All the bone metastasis patients or patients with breast metastasis or painful tumors, we expose them to near infrared. And for post chemo, we expose them to far infrared sonars, which will be helping in eliminating the excess amount of drug circle. Because pharmacology में हम पढ़ते हैं first pass effect. अब 100 mg लिया तो 20 mg may be absorbing, 80 mg will be circulating for no use. We need to eliminate that particular thing. Then we use hydro sun. This is a combination of light and water. We use laser spectrum with water inside for different colors. Yoga and chromotherapy is mixed in this particular thing along with, it is also called water filtered infrared irradiation, VIRA, WIRA, water filtered infrared irradiation. Then the latest one which we are going to bring in now, January, is something called high intensity focused ultrasound. So ultrasound say we can do biopsy of tumors, or we can shake the tumor without any scar. We can actually trigger the tumor, and with all the other therapies we can eliminate that. So certain surgeries or complicated surgeries which the surgeon cannot do because of the adjacent structures involved, this particular solid tumors can be treated with this particular therapy. So we got training from China. Haifu Hospital is funded by government of China. So this we are bringing next year. And we use a lot of like micronutrient supplementation. We use pre and probiotics. अगर खाने से नहीं मिल रहा तो you have to supplement prebiotics. Then we use vitamin C in a liposomal drink way. Then we use CoQ10. Again, coenzyme Q10 is one of the component in your Krebs cycle. And the last phase of conversion of ADP to ATP, it is modulated by coenzyme Q10, which is deficient in usual cancers. And उसके अलावा we use resveratrol, which is nothing but grapeseed extract, a phytonutrient from grapeseed. Then we use nanocurcumins. We use ionistol myophosphate for estrogen-induced tumors. We use cannabis in different spectrum. So all I'm saying is like this come from a lot of experience, and there's a possibility. I'm telling, when I can do that, I'm also same like you. Every one of us can get trained and you can do this particular thing, provided you have a very cordial relationship with your oncologist, with the team. Because it's about the team management. You cannot step in or step out from a thing. You need to philosophically and scientifically able to convince the other physician, whoever is, whichever discipline they belong to. Then these are certain supplements which we use. And also finally, we do a lot of naturopathic based counseling, orthopedy, the right disease and right cure. Sometimes whatever happens in our body is for a right thing. Sometimes because we have to philosophically empower to handle a condition, because it's about living this moment. Tomorrow's moment is not guaranteed. How you are convinced about convincing a patient, because convincing a patient who is in deathbed is an art. For that, the patient sitting in front of you should believe that you are not speaking from your brain, you are speaking from your gut. Of course, gut is controlling the brain. So आपका पेट से बात करना है. जब आप बात करेंगे, what am I talking? In the slide कुछ भी नहीं है. मैं जो बात कर रहा हूं मेरा मन से बात कर रहा हूं. I'm speaking from my stomach, because we are involved in this. When you involve yourself as a physician in the care, the right disease evolves. Patient believe that, okay, this is a minimal disturbance my body is doing for protecting my 9,900 cells out of the 100 cells which are damaged. ये जो concept को हमको बहुत strongly, because have you ever seen God? Any one of you, we have done Saraswati Vandanam and all. How many of you have seen Saraswati? Saraswati, you have not seen. So none of us have seen Saraswati, but we believe in Saraswati. Why? Because the belief system from our childhood.
जैसे कि बचपन से शक्तिमान देखे सरस्वती का याद आता है, चंद्रकांता देखे सरस्वती का याद आता है, अलिफ लैला देखे सरस्वती का याद आता है। जो भी चीज हम हिप्पोकैम्पस में जाके रजिस्टर हुआ है, द बिलीफ बेस्ड सिस्टम इज समथिंग विच इज वर्किंग। सो पेशेंट को बिलीफ लेने के लिए यू शुड बिकम ए सदगुरु, you should become a Baba Ramdev, you should become a Sri Sri Ravi Shankar with a BNS degree from Pandit Ravi Shankar Shukla University. Unless you do that, you cannot change anything. They will just think you as an adjunct care physician, जो नॉर्मल चीज करे उसके साथ ए बी में ऐड कर लेता, जिंदा रहेंगे तो रहेंगे। आपको उम्मीद दिलाना है उनको, यू आर गोइंग टू लीव, वी आर द प्राइमरी केयर प्रोवाइडर, वी आर ट्रीटिंग द रूट कॉज वेयर समबडी एल्स इज टेकिंग केयर ऑफ योर कॉम्प्लिकेशंस। ये जो बैलेंस जब आप लेके आएंगे, थिंग्स विल बी बेटर। सो दिस इज अ रीसेंट पब्लिकेशन ऑफ आवर्स इन फ्रंटियर्स इन एंडोक्राइनोलॉजी। जैसे कि हमारा बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिक मार्कर्स है विच कम्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स, जैसे कि ऐसे नेचुरोपैथ आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस पब्लिकेशन, बिकॉज हम लोग हमेशा ऐसा वाला पब्लिकेशन करने के लिए शुरू करते हैं, सिटिंग इन हिप बाथ टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। We need to conceptually publish thing. When you want to believe in certain thing, if cancer is coming, whether I'm doing the right thing or not, it is published in a modern endocrinology journal, fully authored by naturopaths, where we tried and understood all the paths which is leading to cancer, which is triggering suppression of your P53 gene or inflammatory cascade, triggering everything, starting from your neutrophils and lymphocyte ratio, your immunoglobulin E, which is a parasitic immunity inside your body. Most of the cancer patients will have a higher immunoglobulin E. Then your CRP levels, your gamma glutamate, and then lipoprotein A, insulin-like growth factor, TSH, ferritin, cortisol, vitamin D, homocysteine, B12, LDH, and alpha-butyrohydrobutyric acid, your ketone bodies. All these things triggers multiple pathways and lead to cancer. So we don't have to wait for someone to get cancer as a diagnosis to treat them. We can check all these markers in a routine basis in all of our hospital. जैसे कि अभी मैं जो ये टेस्ट हमारा हॉस्पिटल में लिखता हूं, द लैब वाले बोलते हैं आपके अलावा कोई नहीं पूछता है सर ये टेस्ट। इट इज नॉट बिकॉज आई एम ग्रेट, मेरा मेंटर्स आर देयर, देयर आर गुड नाइस एलोपैथिक फिजिशियंस, नाइस नेचुरोपैथ्स, नाइस होम्योपैथ्स हु अंडरस्टैंड मेडिसिन आउटसाइड द डिसिप्लिन वेयर वी बिलोंग टू। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सब लोग सेल्स है। सेल्स को क्या चाहिए? If the cells is having some problem, cells will abnormally utilize micronutrient. If the cells are stable, comfortable, your nutrient levels will be homeostatic. There is nothing called abnormal or normal. I'm saying with homeostatic level. So आपको ये देख के रहना है metabolically हम कितना active है. So we use counseling, oncotomy as I told earlier. This is the electrode where they place and heat up the cancer cells. Then vitamin C, ozone, chelation, diet therapy we use. I'm not going into it because these slides will be there with you. You can use it for Chhattisgarh. And curcumin, vitamin D supplementation, probiotic supplementation, coenzyme Q10, sodium bicarbonate, hyperbaric ozone, medical cannabis, coffee enema, colon hydrotherapy, mud applications, then molecular hydrogen we use in our hospital, then sun exposure, very, very important, not only just for vitamin D, for having good mental health. जब आप पेशेंट को रूम के अंदर लिटा के डार्क रूम में ट्रीटमेंट करते हो, द पेशेंट इज नेवर गोइंग टू रिकवर। उनको ऑन अ डे टू डे बेसिस एवरी डे सन एक्सपोजर होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोथ फॉर द लंग्स एंड द माइंड। एंड देन योगा थेरेपी, एक्यूपंक्चर एंड दिस मैग्नेट व्हिच आई हैव ऑलरेडी शोन। सो कैंसर केयर इन योगा naturopathy is about, we are not palliative care physicians. First make it very sure, either you do curative care or don't do anything. Palliation is just the job of morphine. Palliation is just the job of nerve blocks. Palliation is just the job of cutting and removing something. If you are believing in thing, go as a curative physician, not as a supportive physician. And focus on identifying and addressing the root cause. And root cause हमेशा body के अंदर नहीं रहता है. Sometimes अंदर रहता है, sometimes नहीं रहता है. Second thing, encouraging active participation of the patient in their own healing process. आप कुछ भी कर लो, मड बात कर लो, मसाज कर लो, एक्यूपंक्चर डाल दो, बस मेरा कैंसर को निकाल दो, मतलब पेशेंट को लात मार के हॉस्पिटल से निकाल दो। इफ द पेशेंट इज नॉट इन्वॉल्व इन द टोटल प्रोसेस, यू आर फेलिंग एज अ फिजिशियन। बाहर जाके बोलेगा नेचुरोपैथी काम नहीं कर रहा है। एवरी पेशेंट फेलिंग इज नॉट you failing, your system failing. So make sure that patient is having active knowledge, active participation. You should have distinct knowledge about healing and disease crisis.
कुछ टाइम पेशेंट को फीवर आएगा, immediately don't go and prescribe an antibiotic, even if a allopathic physician is available at your home. Make sure that you are having dialogue. Are you expecting a fever? पहले आप बता दो. If you are expecting a fever, then it is not to be treated. If you are not expecting a fever, definitely it need to be treated. And also, when you are in a terminal ill setting, आपका ये बहुत जरूरी है, you understand all the emergency scenarios. Okay? अगर patient pedal edema के साथ आ रहा है, आपको क्या देखना है, आपको याद होना चाहिए. You should look into the albumin in the liver function. You have hypoalbuminemia, you will have edema in the body. You should know. So if the patient is having a chemo port where we use for putting chemotherapy, if the patient is getting fever which is not controlled continuously with all the high-line antibiotics, suspect there is going to be an infection within the chemo port which will be invisible for 6 months. You require a surgical support to remove the chemo port and treat that particular patient. You need to infuse antibiotics into that. So such kind of knowledge you should gain over a period of time by working with people together, understanding things, and then you will be able to do this stuff properly. So points to remember, don't be an adjunct physician. Either you do it or don't do it. Second thing, never underplay your philosophies. Because जो भी मैं बात किया आज, it is based on my philosophy. The philosophy of yoga and naturopathic medicine. Second one, don't be a symptom manager or a disease manager. Treat the root cause. Fourth one, don't be a prey for technological bias. क्योंकि अगर आप रिपोर्ट्स देके डरने के लिए आप भी डर रहे हो तो मतलब आपका और दूसरों का कुछ डिफरेंस ही नहीं है. रिपोर्ट शुड बी बियॉन्ड व्हाट यू ट्रीट. रिपोर्ट इज समथिंग अंडर योर कंट्रोल. क्योंकि रिपोर्ट इज आज की सिनेरियो, कल का आपको भी पता नहीं, उनको भी पता नहीं है. बट व्हाई नॉट टू गो विद अ पॉजिटिव सिनेरियो? Then practice with confidence, push your boundaries. Just try and move out of your comfort zones. पहले जब मैं मिरेकल में गया था, I have never been exposed to a terminal ill setting because I have been a researcher all my life. The last thing I wanted to do is touch a patient. पहले. And I was forced to be into integrative oncology. पहले patient को जब ऐसा situations आता है, there will be SpO2 low, they will be having emergency condition. मुझे psoriasis आया. I had got a big patch of psoriasis in my chest. Because I was not able to control my emotions and attachments with patients. क्योंकि naturopath हम easily attach हो जाता है, क्योंकि ऐसे patients आते हैं आपके साथ बहुत देर बात करेंगे and you are also first time. और मेरे ख्याल से after 8 long years I went into a clinic and sat. Otherwise I sit with my clinician friends, take up their data, write the publication and tell that and come and present with a nice airfare paid by the thing. My clinician friends will be listening from there. Today as a clinician when I'm standing, I'm understanding वो इमोशनल ट्रॉमा आपको कितना अफेक्ट करते हैं. सो यू नीड टू फाइंड अ वे टू हील योरसेल्फ, ट्रैवल across the stream, swim across the stream to push your boundaries. And these are certain cases which we treated at our hospital. So as I told earlier, your brain always contains sugar. इसको कम करना ही हमारा मेन काम है, क्योंकि sugar will be reduced in your brain only when your brain is sleeping, brain is relaxed, brain is not thinking anything. मेडिटेशन के टाइम पे भी ब्रेन एक्टिव हो तो इट इज नॉट अ रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड. सो यू विल बी कंटिन्यूअसली प्रोड्यूसिंग शुगर फॉर द एक्टिवेशन ऑफ ब्रेन. सो कैंसर्स विल लुक ब्लैक बिकॉज इट इज हाइपर मेटाबॉलिक. सो अब जब उसका मेटाबॉलिज्म को ठीक करते आएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू विल फाइंड changes in the tumor cells. So this is a lung cancer and all these are skeletal metastasis. This is after 1 year, the entire thing changed and patient is still being followed up. And then this is a high-grade glioma, right, sitting here, and there is a 30% of reduction. The patient is a 61-year-old farmer. उनको ट्यूमर निकालना नहीं, उनको बस जीना है. सो हमको पेशेंट को प्रायोरिटीज को एड्रेस करना है. सो कभी कभार होता है कि रेडिएशन करना है तो करना ही है, ऐसा हमको प्रेशर नहीं करना है, क्योंकि ऑटोनॉमी ऑफ द पेशेंट ऑल्सो मैटर्स. आपको पूरा सिनेरियोस पॉसिबिलिटीज एक्सप्लेन करना है. देन द चॉइस शुड बी पेशेंट्स, क्योंकि we are not 100% sure about what we are doing. Then this is an infratentorial meningioma. Because it was sitting in the medulla, it was inoperable. ये ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे अपोलो में. So we reduced the size to 30%. Then they went for a surgery. अभी ये patient is walking. So at times you have to integrate in such a nice way. When it was 100%, no knife will go. You cannot do a surgical knife, not a proton radiation also. When it reduced by 30%, the surgeons could nicely work on this. The patient is walking, he's a head of an MNC company. Okay, so this is a breast cancer with bone metastasis, completely healed in our hospital. And this is again a fungating tumor.
which has got completely healed, and now you can see the granulation over here. And this is the dermal scan image, how it looks like. These are just showing to there is a possibility. All these patients are left over to die. There are hundreds of patients in our hospital, and the integrative medicine therapy, detoxification, physical workout, bad diet. What is mean a bad diet? Biologically active diet. The food should be activating your biological rhythm. Personalized fasting. Everybody should not go on fasting. Check their BMI, check their status, whether they are having an emaciation, whether their protein loss is there, muscle weakening is there. Based on that, you will be treating injectable nutrients, the nutrogenomic supplements which I have shown you earlier, and conventional medicine is also an integral part of the care. Don't forget, we are not talking about moving away, we are talking about coming closer together for a better reality. Okay, so this is the team of ours. There's our chairman, and Dr. Ayyappan is our oncologist, and Dr. Tangavelu is an 83-year-old general physician who is an old school physician who don't require CT scan to diagnose a case. Amazing physician. We are learning a lot from him. Then we have other BNYs and BHMS doctors in our team. And thank you so much for the opportunity. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नायर सर जी। बहुत कम शब्दों में आपने बहुत अच्छे से अपने विषय को, अपने बातों को रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः डॉक्टर एन के नायर सर। इनके विषय में बस इतना ही कहना चाहेंगे। नेचुरोपैथी ऑन्कोलॉजी के अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ, ज्ञान एवं साधना का अद्भुत संगम, डॉक्टर प्रदीप एन के नायर जी। आपको पाकर यह मंच धन्य हुआ। भारत के गौरव, अनुसंधान एवं उपचार के दिग्गज, नेचुरोपैथी के विश्व स्तरीय विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप नायर जी। सर, आपके वर्कशॉप में आपके द्वारा बताई गई बातों को हम अपनी कार्यशैली में धारण करने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत ही सरल भाषाओं में, बहुत ही सरल शब्दों में आपने अपनी बातों को रखा है, जो हमारे हृदय और दिल की गहराई तक वो बातें सभी, और दिमाग तक वो बातें सभी पहुंच कर आई है। बहुत धन्यवाद। मैं टोरेंटो से सम्मानित करने के लिए आदरणीय हमारे नायर सर को सम्मानित करने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। डॉक्टर कादिर खान सर, डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर खान्स आयुष क्लिनिक, मैं चाहूंगा आप आए और डॉक्टर नायर सर का स्वागत, अभिनंदन करें। डॉक्टर कादिर खान सर, डायरेक्टर डॉक्टर ऑफ खान्स आयुष क्लिनिक। आगे सालिया बस्ती होनी चाहिए। आपका सम्मान कर हमें बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है डॉक्टर नायर सर। आपका प्यार आशीर्वाद यूं ही हम सब पर बना रहे। मैं अगले क्रम में आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर यूसुफ मेमन सर, जिनके विषय में हम इतना ही कहना चाहेंगे। डायरेक्टर संजीवनी सीडीसीसी यूएसए कैंसर हॉस्पिटल रायपुर। अब आ रहे हैं ऐसे दिग्गज जो कैंसर चिकित्सा के अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ, विनम्रता और ज्ञान के प्रतिरूप, डॉक्टर यूसुफ मेमन जी। हम आपको आमंत्रित करने का गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। चिकित्सा जगत के उज्जवल सितारे, अद्वितीय चिकित्सा डॉक्टर यूसुफ मेमन जी हमारे कार्यक्रम का सौभाग्य है। सेवा एवं उत्कृष्टता के प्रतीक डॉक्टर यूसुफ मेमन जी, आपका स्वागत, अभिनंदन है। आई रिक्वेस्ट टू प्लीज टेक दैट if you're आदरणीय सीनियर भारती सर, डॉक्टर विवेक भारती, आज के कार्यक्रम के वर्कशॉप के मुख्य जो हीरो हैं डॉक्टर प्रदीप नायर, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्माननीय सज्जन, सभी डॉक्टर्स एवं फ्रेंड्स,
आज हम जो है विश्व नेचुरोपैथी दिवस है, इसकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बहुत ही खुशकिस्मत और सम्मानीय महसूस कर रहा हूं कि मुझे आज इस कार्यक्रम में बुलाया गया और मुझे डॉक्टर प्रदीप नायर को सुनने का मौका मिला। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा चिकित्सक कौन है, तो सबसे बड़ा चिकित्सक जो है वो प्रकृति है। और आप लोग जो है नेचुरोपैथ हैं, यानी प्राकृतिक चिकित्सक हैं, तो ऑब्वियसली आप लोग जो है सबसे बड़े चिकित्सक हैं। एलोपैथी जो है वो एक जो सिम्टम जो होता है उसका मैनेजमेंट करता है, जबकि हमको रूट कॉज को ट्रीट करना चाहिए। बच्चा जब पैदा होता है माँ के पेट से, तो ऑटोमेटिकली वो रोने लगता है, ऑटोमेटिकली वो सांस लेने लगता है। तो ये जो है ये सब प्रकृति है। और ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है, जो नेचुरोपैथी है, ये एक साइंस है। तो हमको इसको समझना है। जो है हमारे पुराने हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि जो बता के गए, और आज जो एलोपैथी में हम लोग जो पढ़ते हैं वो बिल्कुल आपस में मिलते हैं। हम कहते हैं कि हमारे बॉडी में जो एलोपैथिक डॉक्टर्स है कि हमारे शरीर में ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स हमारे पूरी बॉडी के हार्मोन को निकालते हैं। अगर ये हार्मोन एंजाइम जब इम्बैलेंस होता है इनका, तो बीमारी होती है। तो मुख्य रूप से 7 ग्लैंड जो है हम लोग एलोपैथी में पढ़ते हैं। पहला है हमारा पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड जो होता है मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है। जब हम रात में व्हाइट लाइट में रात भर मोबाइल में जब हम लगे रहते हैं, तो हमारा मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है, हमारी नींद हो जाती है, हम अगले दिन ठीक से उठते नहीं। इससे हमारा जो बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है और हम अनेक प्रकार की बीमारियों के लिए जो है हम प्रोन हो जाते हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरा ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मास्टर ग्लैंड है, जो हमारी बॉडी के सारे ग्लैंड्स को जो भी हार्मोन निकलते हैं उसको ये कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारा तीसरा जो मुख्य ग्लैंड हम लोग एलोपैथी में पढ़ते हैं वो है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड सारे इम्यून सेल्स जो होते हैं, टी सेल इम्यूनिटी जो हम पढ़ते हैं, ये पूरे इम्यून सेल्स जो है थाइमस ग्लैंड में बनते हैं। अगर ये बैलेंस नहीं रहेगा तो हमारा जो है इम्यून सिस्टम खराब होगा और हम सभी बीमारियों के लिए, चाहे वो कैंसर हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, और जितनी भी बीमारियां हैं उसके लिए हम प्रोन हो जाते हैं। चौथा महत्वपूर्ण ग्लैंड जो हम पढ़ते हैं वो हमारा पेनक्रियाटिक ग्लैंड है, जिसको अग्नाशय कहते हैं। ये इंसुलिन हार्मोन बनाता है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा कंट्रोल करता है। अगर ये हार्मोन का की कमी हो जाए, या पेनक्रियास से निकलने वाले एंजाइम जो हमारे बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं, पेप्सिन और बहुत सारे जो भी हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं, ये पेनक्रियास से निकलते हैं। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। उसके बाद अगला जो ग्लैंड आता है वो है हमारे टेस्टिस और ओवेरियन ग्लैंड्स। ये ऐसे हार्मोन निकालते हैं जो महिलाओं में, पुरुषों में जो है बहुत सारे फंक्शंस करते हैं। उसके बाद सातवां और बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारा ग्लैंड है वो है एड्रिनल ग्लैंड, जो कि एड्री कॉर्टिसोल निकालता है, जो कि स्ट्रेस सिचुएशन में ये सीक्रेट होता है। जैसे कि फ्लाइट एंड फ्लाइट मोड जो सर बता रहे थे, आज की सिचुएशन में हम जो है सोशल मीडिया, रात भर जागना, हम अपने इन सारे ग्लैंड्स को इम्बैलेंस कर रहे हैं। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि बता के गए कि ये आपका सहस्रार चक्र है, पिट्यूटरी ग्लैंड है आपका आज्ञा चक्र है, ये थायराइड ग्लैंड जो आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है विशुद्धि चक्र है, थाइमस ग्लैंड जो है यहाँ ये आपके अनहद चक्र के समकक्ष है, ये जो पेनक्रियाटिक ग्लैंड है ये आपका मणिपुर चक्र के समकक्ष है, और जो स्वादिष्ठान चक्र है हमारा ओवरी और यूट्रस, और एड्रिनल ग्लैंड हमारा मूलाधार चक्र। तो वो भी तो हजारों साल पहले हमको बता के गए कि अगर हम अपने सारे चक्रों को बैलेंस करते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। और आज के एलोपैथिक डॉक्टर्स इतना सब रिसर्च करने के बाद यही बता रहे हैं कि आपकी ये ग्लैंड अगर सही ढंग से काम करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा।
तो बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि हमको बीमारी का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बस नहीं करना है, बल्कि हमको उसके रूट कॉज को जाकर के उसको ठीक करना है। और रूट कॉज को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें चीजों को फिर से प्राकृतिक ढंग से करना होगा। प्राकृतिक चिकित्सा में मुख्य रूप से मैं देख रहा था कि क्या होता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में मुख्य रूप से जो है हमारा भोजन, हमारा जल, हम जो वायु लेते हैं, और हमको प्रकाश प्रॉपर मिलना चाहिए, हमको अच्छी नींद आनी चाहिए, रेस्ट मिलना चाहिए, और हमारा मन अच्छा होना चाहिए। तो हम लोग एलोपैथी में भी यही करते हैं कि अगर कोई पेशेंट किसी इलाज के लिए आया है, तो अगर ये चीजें अगर साथ में ना हो तो हमारा कोई दवाई काम नहीं करेगा। कैंसर पेशेंट्स आते हैं, उनको भूख नहीं लगती, उल्टी होती है, उनके बाल झड़ते हैं, उनको थकान बहुत ज्यादा लगती है, भूख तो बिल्कुल मर ही जाती है, और जो है डिप्रेशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं कि आगे क्या होगा। अगर प्राकृतिक ये जो नेचुरोपैथी अगर हम साथ में करते हैं, हम उनका भोजन अच्छा कर देते हैं, हम उनको रेगुलर एक्सरसाइज के लिए समझाते हैं, हम उनको योग प्राणायाम के लिए समझाते हैं, हम उनको जो है प्रॉपर रिलैक्सेशन रेस्ट के लिए समझाते हैं, और उनके रूट कॉज को ढूंढते हैं कि क्या उनके साथ ऐसी घटनाएं हुई जिसको अपने मन में बांध के रखे हुए हैं। अगर हम इन चीजों को एलिमिनेट करते हैं, योगा प्राणायाम, उनके सब कॉन्शियस को ठीक करके, उनको हिप्नोथेरेपी वगैरह आजकल जो मेडिटेशन की टेक्निक है, तो हम न सिर्फ कैंसर बल्कि लगभग सभी बीमारियों को हम जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। मैं डॉक्टर विवेक भारती का धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में बुलाया, जिसमें मुझे डॉक्टर प्रदीप नायर सर को सुनने का मौका मिला। एक बार आप सबको फिर से इस नेचुरोपैथी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर यूसुफ मेमन जी। आई रिक्वेस्ट टू प्लीज स्टे फॉर 1 मिनट। मैं श्रीमती पूनम दुबे जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और मोमेंटो से आदरणीय मेमन सर का स्वागत अभिनंदन करें। श्रीमती पूनम दुबे जी, प्रिंसिपल श्री महावीर कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस नागपुर। जी मैडम, मैडम जी आपके विषय में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि फूलों से महका हुआ जगह, फूलों से महका हुआ जगह गुलदस्ते में सजाने के लायक होते हैं, और आप जैसे शानदार शख्सियत सबके दिल में बसाने के लायक होते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फिर से तो मैं मन करते हुए हमारे बीच जिनकी गरिमामय उपस्थिति हमें प्राप्त हुई है, श्री डॉक्टर आज का हमारा जो शेड्यूल है, ये सेशन लगभग एंड हो रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन रहेगा आफ्टर लंच, हमारे बॉलीवुड बॉलीवुड फ्यूजन परफॉर्मेंस परफॉर्म करेंगे श्री जितेंद्र राठौड़ जी, और उनके बाद इनॉग्रेशन सेरेमनी है धन्वंतरी वंदना के पश्चात। और उसके बाद हमारे जो वेलकम गेस्ट हैं आज के, वो सभी जिनकी उपस्थिति आज हमें मिलने वाली है, श्री हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, श्री अनुप शर्मा जी, श्रीमती शिखा राजपूत जी, श्री डॉक्टर सुनील दास जी, श्री डॉक्टर संजय शुक्ला जी, डॉक्टर प्रवीण कुमार जोशी जी, डॉक्टर आर के श्रीवास्तव जी, डॉक्टर प्रदीप नायर जी, और उसके बाद वेलकम स्पीच डॉक्टर भारती जी का, विवेक भारती जी का। देन नेचुरोपैथी चैलेंजेस एंड इट्स फ्यूचर स्कोप वो लेकर आएंगे डॉक्टर प्रेमलाल पटेल जी। Then a speech speaker by Dr. Praveen Kumar Joshi ji. Then speech by speaker Dr. Sanjay Shukla ji. Then speech by Dr. Sunil Kumar Das ji. I request for vote of thanks for this. I request to please come on the stage, Dr. Bharti ji, Dr. Vivek Bharti ji, for vote of thanks, for giving vote of thanks. I request to please come on the stage.
गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो मैं हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने एक सार्थक प्रयास किया कि आप सबको प्राकृतिक चिकित्सा और योग के अलावा कैसे उसे इंटीग्रेटेड वे में कार्य किया जा सकता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए जब हमने डॉक्टर प्रदीप नायर सर जी को आमंत्रित किया तो उन्होंने बहुत ही सहज रूप से उसे स्वीकार किया। बहुत सारे हमारे अपनी चुनौतियां थी, बट सब पूरी हुई क्योंकि हमारे उद्देश्य अच्छे थे और भगवान का साथ हमारे साथ था, माता पिता का आशीर्वाद हमारे साथ में था। इसलिए इस कार्यक्रम को करने के लिए सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रदीप नायर सर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इतने दूर से समय निकाल कर यहां पहुंचे और इतना अद्भुत सेशन किया। और मैंने पहले भी उनका सेशन अटेंड किया है। बहुत नॉलेजेबल, अंडरस्टैंडिंग और आपकी आंखों को खोलता है कि प्राकृतिक चिकित्सा और योग में कितने आयाम हैं और कैसे आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, कितनी संभावनाएं हैं आपको उसको पूरा करने के लिए, और आप सब में वो शक्ति है, आप पूरा कर सकते हो। तो मैं इस मंच से सबसे पहले डॉक्टर प्रदीप नायर सर को धन्यवाद देता हूं। एक जोरदार ताली उनके इतने दूर से हमारे बीच आगमन पर। मेरे पास शब्द नहीं है डॉक्टर यूसुफ मेमन सर के लिए। वो इतने प्रभावशाली हैं, इतने शक्तिशाली हैं, शरीर से, मन से, विचारों से, कार्यों से। मैंने उनका कार्यशैली देखा है। इतना बड़ा हॉस्पिटल मैनेज करते हैं, इतनी बड़ी टीम उनके साथ में काम करती है, और जब उनसे मिलने जाओ वो हमेशा सहज सरल मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे, जबकि उनको दिन भर जटिल से जटिल कैंसर रोगियों को देखना पड़ता है। तो आप समझिए कितने पेशेंस चाहिए। और पता है आपको उनके इस पेशेंस का राज क्या है? उनके इस पेशेंस का राज है वो नियमित योग करते हैं, रोज योग करते हैं। वो उनके जीवन शैली का हिस्सा है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि उन्होंने योग पर कोर्स भी किया है। ये क्यों किया? ताकि वो अपने कैंसर के रोगियों को एक बेहतर इलाज दे सके, इंटीग्रेटेड इलाज दे सके। सिर्फ सर्जरी ना करें, सर्जन है, एक्सपर्ट है उसमें, बट वो चाहते थे कि नहीं, कि मैं योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से उस रोगी का शरीर और मन समतल कर सकूं। इसे भव्य मौके पर जब हम प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मना रहे हैं, जहां पर हमने कैंसर का इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है आप सबके लिए, उनकी उपस्थिति में ऐसा कैसे संभव था? मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उनका आगमन हमें ऊर्जा दिया, आत्मबल दे रहा है कि हम अपने कार्य को और आगे बढ़ा सकते हैं। सदन में उपस्थित सभी को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि यहां पर हमारा पहला सत्र पूर्ण होता है। पहले सत्र के बाद आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है, तो आप सभी भोजन करेंगे। भोजन के बाद की रूपरेखा आपको दी गई है, भोजन ठीक नीचे में है और आपको मार्गदर्शित किया जाएगा। तो यहां पर हम एक प्रयास कर रहे हैं कि हम समय से इस सत्र को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अतिथियों से भी हमने निवेदन किया है। आपको जान करके मैंने सर से निवेदन किया था, तो सर आप 11:30 तक आ जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। डॉट 11:30 में हमें बाजू में बैठे थे। ये उनकी प्रॉम्प्टनेस है, ये उनकी अलर्टनेस है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। इट्स नॉट द टाइम फॉर अ फाइनल थैंक यू। सो इसलिए इस सत्र को समापन करते हैं, फिर मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।